on the very important topic, role of women in building a nation, building a Bharat. Kusum ma'am told us the women should be empowered enough that they should be confident enough to live their life happily and confidently. Then Mahendra Kumar sir enlightened us about the family values. Okay? The values start from the families only. So as a woman, we should imbibe good values in our family so that they are going to the nation, they are going to the outside world and spreading these values to the nation. And then at the last, Professor Kuldeep Chand Agnihotri ji has concluded very well and told us that this is the coordination between parents and children. Okay? If they will be coordinate, they will do some sacrifice, only then values can be imbibed. Okay? तो जैसा हम करेंगे वैसा ही आगे बच्चे भी follow करेंगे. Okay? So last but not the least, I want to thank organizing committee for organizing such a good session. Okay? And last, all the participants, thank you very much for having patient listening. Thank you very much. Now there is a lunch break for 30 minutes only. Okay? Let's come back and join for session, plenary session 2. परिचय दूंगी, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध कि कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और जैसा सेशन 1 में आपको आनंद की अनुभूति हुई थी, वैसा ही कुछ अभी भी होने वाला है, तो थोड़ी शांति भी बनाएं। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर सिंधु कपूर जी, श्रीमती नयन सहस्त्रबुद्धे जी। और मैं तीनों से आग्रह करूंगी कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हम देख रहे हैं मंच पर महिलाओं की बहुतायत है, तो इसलिए मैं पहले शुरू कर रही हूँ श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी से। उनके जीवन का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी। मनोज जी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन से हैं और भारतीय राजस्व सेवा 1985 बैच और भारतीय प्रशासनिक सेवा 1987 बैच से संबंधित हैं। थोड़ा भ्रम और संकोच है मुझे, क्योंकि वैसे मैं कह रही हूँ ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन लगता है कि ये शैक्षिक कार्यों से ज़रा ज़्यादा जुड़े रहे हैं। इनकी 38 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 18 पुस्तकें सुंदरकांड एक पुनर्पाठ, इतना गहन अध्ययन इन्होंने सुंदरकांड का किया है कि 18 पुस्तकें उस पर लिखी हैं। और एक और खास बात कि प्रशासनिक अधिकारी हालांकि बहुत कड़े स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये तो कवि भी हैं और इनकी 10 कविता की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो पुरस्कार इन्होंने अभी तक जीते हैं। साउथ बैंक लंदन से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और नेहरू केंद्र लंदन का अंतर्राष्ट्रीय वातायन पुरस्कार, संत समाज अयोध्या का राम किंकर उपाध्याय पुरस्कार, भारत सरकार के राष्ट्रीय हिंदी संस्थान का विवेकानंद पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कबीर सम्मान भी इन्हें मिला है, उर्वशी साहित्य पुरस्कार और अक्षर आदित्य पुरस्कार। तो अब मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर प्रेमपाल जी से, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का स्वागत करें एक शॉल व स्मृति चिन्ह देकर।
दूसरी मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर सिंधु कपूर जी। प्रोफेसर सिंधु कपूर is teaching history in the Higher Education Department of Jammu and Kashmir since 1999. She has been a topper and gold medalist throughout her student life. She has delivered more than 50 lectures as resource person or as subject expert. She is the founder coordinator of MA Integrated Course in History, Cultural Heritage in the School of Social Sciences, Cluster University of Jammu. She is also the convener of Board of Studies in History, CLUJ, besides being a member of Syndicate and Academic Council of Cluster University of Jammu and Kashmir. Author of 4 books and a number of research papers, Professor Sindhu is presently working as Dean, Faculty of Social Sciences, Cluster University of Jammu, and is devoted to the cause of documenting the local history, heritage and oral traditions. She is also member, National Executive Council of Bharatiya Stri Shakti and a lifetime member of GAP India. She has recently been nominated as member, Juvenile Justice Selection Committee, constituted by Government of Jammu and Kashmir, Union Territory, under the Juvenile Justice Rules of 2021 in July 2022. Now I request Dr. Manoj Khan to felicitate Professor Sindhu Kapur with a shawl and a memento. Our next speaker of the session is नैना सहस्त्रबुद्धे। नैना सहस्त्रबुद्धे एक बैंकर है, a student of gender dynamics, an activist and social worker. She is also a writer. विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य, सामाजिक काम और ट्रैकिंग में रुचि थी। लेखन भी काफी किया और विद्यार्थी परिषद का काम किया। 1984 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी की, विभिन्न पदों पर और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। अब डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। 1990 से भारतीय स्त्री शक्ति में कार्यरत हैं, विभिन्न पद और दायित्वों का निर्वहन किया। अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। स्त्री शक्ति के प्रकाशनों में नियमित लेखन करती रही हैं। स्त्री पुरुष समानता और जेंडर विषय पर लिखी पुस्तक स्त्री भान 2019 में प्रकाशित हुई। उसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कुल अभी तक 3 पुरस्कार मैडम को मिल चुके हैं और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें संपादित की हैं, जिसमें से एक है 50% आरक्षण और मैं। पहली बार चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के लिए हैंडबुक लिखी है, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन विमेन। External member, she is an external member on advisory committee of National Commission for Women. She has curated many conferences and seminars. She has been a keynote speaker a number of times and she is a motivational speaker as well. Gender Smart City Mission और Indian Feminism के कार्य में ये बहुत अग्रणी है। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर अमूल्य जी से स्टेज पर आए और नैना मैम का शॉल और मेमेंटो देकर स्वागत करें। Shri Manoj Kumar Srivastava ji, sir, now the stage is all yours. पहले सिंधु कपूर जी संबोधित करेंगी। यहाँ
मन से करना हो तो यहाँ तो या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। सभाए नमः। सम्मानित मंच को भी मेरा प्रणाम व नमन। At the outset, I take it my duty, a very pleasant one, to express my gratitude to NCB, NCWeb, University of Delhi, for organizing this two-day seminar on the most relevant topic, footprints of women in the making of Bharat. And at the most, I am grateful to Dr. Geeta Bhatt for making me part of this beautiful moment. In this second plenary session, we are supposed to talk about the glorious women in the annals of Indian history. And definitely, since morning, we have had wonderful deliberations on the various aspects of women, her participation in nation building, decision making, and at the same time, in the making of Bharat. Cutting the things very short and coming to the point, because we have to do justice with the topic within 20 minutes. My idea of glorious women, actually, when we are talking in the context of Bharat, is based upon two major factors, two major things, two major areas. Because there were the times when history was constructed, history was written, history was produced only as the history of the dynasties, history of the kings. But nowadays, history has understood its challenges and its limitations going by this historiography. And today, we have come to the conclusion, if proper इतिहास और वो भी भारतवर्ष का इतिहास अगर समझना है तो बहुत जरूरी है to understand it, interpret it in terms of cultural continuity. And many a Gordian knots of the past will get solved if we abide by this new principle of historiography. As E.H. Carr has said, he has given wonderful definitions of history. But one thing which he has actually written in his book, What is History? History is also called as enormous jigsaw, meant to fill up the missing gaps. And definitely, today we are talking about, in the 21st century, we are talking about the footprints of Indian women. It is a question mark on the type of society we have had till now, on the type of history studies of history we have had till now, and what kind of history our students are reading. हमने उनको कौन सी किताबें दी और उन किताबों में क्या इनके रेफरेंसेस नहीं है, आज हमें उसके फुटप्रिंट्स ढूंढने पड़ रहे हैं. No seminar we will find finding the footprints of or contribution of our counterparts, men in the making of Bharat. So this gives us a thought-provoking jolt when we have to study this from a new angle today. लेकिन हम ये किस भारत की बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी विषय में बहुत कुछ सुबह से बातें हुई, मन में बहुत सारे उसके प्रश्न और उत्तर दोनों हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे कन्फाइन करते हुए कहती हूँ, इंडिया इज द लैंड ऑफ फीमेल डिविनिटी. हम
उस भारत के वासी हैं जहां पर शक्ति का पूजन होता है। What is Shakti? Shakti is derived from the Sanskrit word shak, to be able to. That means if women is taken as the connotation of Shakti, we are powerful. And we worship Shakti in her various forms. Just now I said, history is what? It is about the story of the various kings. Because we know to wage a war is the function of the king. Is it true? But we worship Shakti in her various forms. One, in her gentle forms, like Ma Gauri, Ma Annapurna, Ma Parvati. But at the same time, we have Shakti in her fierce form also, where she kills the demons. She is the protector. Gentler forms of the Shakti are the giver of boons, whereas Ma Chamunda, Ma Durga, Ma Kali, Ma Kalaratri, they are the ferocious forms of that Shakti who protect her children from all the evils. और उस भारत देश की गौरवशाली इतिहास में हम ये सोचें कि हमारे यहाँ वीरांगना नहीं हुई, हमारे यहाँ साम्राज्य नहीं हुई, और हमारे यहाँ महिलाओं ने, नारी ने कभी किसी वीरता की झंडे नहीं गाड़े या किसी लड़ाई में उसकी पार्टिसिपेशन नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी हमारी इतिहासकारों की गलती है कि ये सब बातें हम अपने करिकुलम में और अपने बच्चों तक आगे ट्रांसमिट करने में असफल रहे हैं। हाँ, सुबह से ऋग्वेद की बहुत बात हुई, तो ऋग्वेद के अपेंडिक्स के हिस्से में श्री सूक्त लिखा गया है। This is written in the eulogization of Shakti, श्री। और हम ऋग्वेद के आगे चलें, हमारा पुराणों का इतिहास, we consider Purans as important source of history. हमारा पुराणों का इतिहास देवी महात्म्य, which forms part of Markandeya Puran, Varaha Puran, Matsya Puran, and thereafter Devi Bhagavad Puran. From earliest times till 12th century, Shaktism gets seated in India, and hence worship of Mother Goddess is accepted all over. इसके थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स की बात की थी। दूसरा पॉइंट, India is a land where we have geographical femininity. We have Brahmaputra, fine, but all the ancient rivers, since their antiquity, they are all feminine in nature. Ganga, Yamuna, Yamunotri, Kaveri, Sindhu, Saraswati, all such civilizations which India boasts of, they have been derived from feminine geography. If we talk about river Sindhu, it has been mentioned almost 170 times in Rigveda, Saraswati 14 times. So this shows that civilizations emerged on the banks of these rivers much later. Their antiquity, historicity is much deeper, much deeper, maybe more than 12,000 years old, if we take Saraswati civilization also into account. And Indus Valley civilization, we know, came much later. Coming to the era of the Mahabharata, we all are well versed with the characters like Madhuri and Gandhari. Who was Madhuri? She was the princess of Madhura Rajya. Madhura Rajya, as per Nilmat Puran, is the land that stretched from river Iravati, which is in present times known as river Ravi, and river Chandrabhaga, which is today river Chenab. ये वो मध्य प्रदेश है जिसे आज हम जम्मू रीजन के नाम से जानते हैं,
और उसकी जो प्रिंसेस थी वो क्वीन बनती है माद्री. एंड सिमिलरली गांधारी came from Gandhar राज्य which is present day अफगानिस्तान. तो गांधार की राजकुमारी अपने ससुराल में भी गांधारी के नाम से जानी जाती है. So see their ancestry, see the acceptability of that very concept when they are married off. ऐसे भारतवर्ष में अगर हम इतिहास का सिफ्टिंग करते हैं, उसको दोबारा से हम अगर खंगालते हैं, तो हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम हो जाती है कि women in since ancient times they were occupying good position. Even the excavations of Indus Valley have established this very point. जो उस excavation के artifacts and जो female torso मिलती है, they are properly bejeweled. They are using all kinds of ornaments. Their dresses were very, very specific and beautiful. They used to wear very fashionable heels, and hence, definitely, we are talking about that participation of a woman which wielded power, which even participated in decision making. Now, coming to their political role in the making of Indian history, we are talking about the social aspects, present times, but it is very important to construct this femininity since ancient times. And we know various queens. We are aware about Noor Jahan, who used to be known as king behind the king. Coins were struck in her name, Khud was read in her name. So we had a number of such queens who wielded power. They were the benefactors, they granted lands to the scholars, various religious centers, they were the patrons of art and literature. They were playing important role in the architectural activity. हम सब रानी के बाव को जानते, उदयमती ने वो बनवाया, तो एक ये उनका contribution है which is part of World Heritage Sites even today. उसी तरह we have got the examples of various queens, like when we study the history of southern India, we come to know the names of the queens were through the various epigraphical sources. The names of the various queens were inscribed on the inscriptions of temples. पैसा, donations, charity वो कैसे करते थे? Because they had this access to the huge sums of money. They wielded power. They were participating in decision making. Queens of Chalukyas of Badami, queens of Chalukyas of Vengi, Nagarjun, Andhra में अगर हम देखें, lot many we get such examples. Everywhere, queens were influencing the kings in the decision making, behind the scene, before the scene. Yes, they were there. And second category of those women who wielded power were the regents. There is a little difference between queens and the regents. In the absence of their husbands, regents used to rule in the name of their children. We have many examples before us. Bichris Qadar's mother, Rani Hazrat Mahal. Queen Didda from Kashmir. Begum Hazrat Mahal, Queen Didda, Queen Sugandha, and even Rani Lakshmi Bai. She wanted to restore her son as the ruler of the Jhansi, and hence they acted for different periods, different times, they acted as regents. The third important category is of those queens who were the sovereigns, who acted as the monarchs. They were the true leaders. They led the darbar, they led the armies, and they were supreme authority inside their lands. This part I want to concentrate upon, because nowadays Indian history is at the beginning I had talked about missing links. Indian history is definitely missing these links whereby we can establish that Indian history can boast of such great, valorous, courageous women who
went against the times and could establish their empire on their own, starting with Prabhavati Gupta, daughter of Kuber Naga and Chandragupta II Vikramaditya. In the last part of the 4th century, when she was married to Vakataka Empire and her husband died, we always say, man of crisis. She became the woman of the crisis and led her empire. So much so, even she used her Gotra as the Gotra of her parents' place, Dharna, instead of Vishnuvrita, which used to be the Gotra of her husband's side. And hence, she could rule so very well for 20 years. Similarly, if we have a proper glance over the history of North, West, Central, South, Eastern India, all over we find that India is having a number of such great women rulers. In the 8th to 10th centuries, there was a very strong empire of Bhumikars in Odisha. तो भूमिकार किंगडम में लगभग 200 सालों के लिए 18 रूलर्स रहे, उनमें से 6 were the women rulers, led by Tribhuvan Mahadevi I, Tribhuvan Mahadevi II, then Gauri Mahadevi, Dandi Mahadevi, Dharma Mahadevi. They all ruled for not less than 100 years together. And it is said, it is very interesting thing to note, that it is said that the rulers of the neighboring states, they wanted that their daughter, the princesses of those states should get married into this family of Bhumikars, because one day she will become the sovereign. What is important? It is a very strong, long history with beautiful anecdotes in between, good stories which we can actually emulate and we can inspire our children with. But coming short and coming to the point, I'll just pinpoint 2 to 3 things. One, none of the queen ever adopted a son to bolster her legacy. And second, they all used all the imperial royal titles like Param Bhattarika, Parameshwar, Param Parameshwar, Maharaj Adhiraj. So they could establish themselves because of their intellect, because of their being skilled in the art of statecraft. Second example, beautiful example, we can quote here of Razia Sultan. We all know about her, but she had used the stage of her coronation as the people's movement. One thing we must understand, she was the person who never wanted to be called Sultana. Sultana means wife of a sultan. She insisted that Turkane Chahelgan, even though it was for only 4 years, 2036 to 2040, but she could insist Turkane Chahelgani of that time to go before her. And the way she had actually fought the whole battle, it is in itself a great learning which we can pass on, transmit to our young generation. Then coming to another important Kakatiya Empire. Kakatiya Empire, we have again a number of queens. और उन सब ने भी ये royal titles adopt किए, and they led the armies also. वारंगल की अगर हम बात करें, 13th century, 50 years after Razia Sultan, वारंगल की जो queens थी, उसकी तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको यहाँ पर छोटे से ब्रीफली सुनाना चाहूंगी. Raja Maharaja was Ganpati Rudradeva. I am talking about last part of the 13th century, Warangal, Deccan. He was bestowed with a beautiful daughter, and when she was born, she was so much accepted by the society of that time that even royal astrologer came and he told the royal couple that this girl is blessed by both Mahadev as well as Parvati. So he named her Rudra Amba. Later on, he was bestowed with another daughter, Pambarani. But
Maharaja never wanted to adopt a son. Rather, he performed Putrika Yagya. What is this Putrika Yagya? A beautiful mention. In this Putrika Yagya, which was carried on by the priest, royal priest of the time, in full public view, he declared his first daughter, Rudra Amba, as his successor. One who will be religiously also permitted to obey, to perform the last rites of the parents also. This is something which should be emulated in the modern times, and these things are missing from our curriculum. और ये रुद्रअंबा वो थी, उसने रौद्रों की तरह अपने जितने भी नेबरिंग स्टेट्स थे उनके साथ लड़ाई लड़ी, और जब गणपति वीक होते हैं और जब उसकी शादी भी हो जाती है, she continues to rule the two kingdoms, and the way she used to fortify, और जिस तरह से उन्होंने वहां वारंगल के आसपास फोर्ट्स क्रिएट किए हैं, आप अगर वारंगल के उस तरफ तेलंगाना की तरफ गए हैं, she even constructed 1000-pillared temple, which is again a part of the World Heritage Sites in India, cultural heritage sites. So she was such a great strategist that she built the various forts, and those forts and that strategy of building the forts was emulated 500 years later by Tipu Sultan also. और मैं बीच में यहाँ जरूर कश्मीर की दिद्दा का भी आपको यहाँ रेफरेंस दूंगी. दिद्दा was the queen. First, she was queen. She got married to Sema Gupta of Kashmir in the year 1950. 1958, Sema Gupta died. For 23 years, she became the regent to her various sons and grandsons, and later, for the last 22 years, up to 1008 AD, she was the sovereign of Kashmir. So for full 45 years, she controlled the polity of Kashmir. She was well versed in the art of Sama, Dama, Danda, Ved. What is so important about her? That she refused to God Sati, number one. And second thing, which is very important, though she was lame, but she was so powerful that she controlled the polity. I'll just take 2 minutes. She controlled the polity of Kashmir, and she was married at the age of 26. I'm talking about 10th century AD. These were the women who went against the times. We have got many such examples, many such examples. दुर्गावती, यहाँ पर उनका बाहर पोस्टर लगा है. वे उनके लिए तो एक बहुत ब्यूटीफुल एनेक्डोट है, जो फादर डॉटर दुर्गावती का आपने सबने देखा ना यहाँ पर, जो आज का प्रेजेंट डे जबलपुर है. शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ द चंडेला किंगडम. शी गॉट मैरिड इनटू गोंदवाना. तो फादर ने कहा, वी आर चंडेल्स, हाउ यू विल बी अ क्वीन ऑफ द गॉन्ड फैमिली. उसने कहा, फादर, दिस इज द टाइम व्हेन मुगल्स आर आफ्टर अस. वी हैव टू काउंटर द मुगल्स. डोंट गेट इनटू दिस कास्टिज्म. एंड after she got married into the Gondwana family, soon, very early, her Dalpat Shah, her husband, died. Thereafter, her brother-in-law never wanted that she should become the ruler. उन्होंने उनको control किया. उन्होंने कहा, no, I have my own right to, I have my own opinion to the future of my kingdom, and I am master of myself, my kingdom, and my son. So I will be the ruler. She immediately got herself coronated. और जिस तरह से बाद में जब मालवा राजा ने उनके ऊपर जब अटैक किया, तो she displayed her courage in such a magnificent manner. और जब बाद में वो कैप्चर भी हो जाती हैं, अपने महौत को कहती हैं, give me the dragon, I don't want to be killed by this man. He refuses, but she snatches the dagger and kills herself. That is why उनका जो बलिदान दिवस है 24 जून को, 24 जून 1564 को वो सब जगह मनाया जाता है, और जबलपुर की यूनिवर्सिटी का नाम भी दुर्गावती विश्वविद्यालय है. तो इसी तरह से हमारे पास बेगम्स ऑफ भोपाल का भी हमारे पास रेफरेंस आता है. कसीदा बेगम, शी ऑल्सो इंसिस्टेड कि उनकी बेटी को नवाब ही कहा जाए. तो उनके पास भी almost 107 years from 1818 onwards, we find almost in succession 6 Begums of Bhopal they ruled over as the complete
complete monarch of the area. So my point which I want to bring to you is that Indian history is truly abreast with various glorious women. The point is, it should be part of our day-to-day discussion and curriculum. And second thing is that they were all the women who were extraordinary. Some of them were rebels also. So in order to be, जो सुबह बात हो रही थी कि वो घर को देखेंगी, गृहस्थी को देखेंगी कि बाहर देखेंगी, point is to maintain this kind of balance. Ahilyabai Holkar, she used to get up during the Amrit Vela, Amrit Kaul में early morning में she used to get up और सुबह वो अपनी पूरी वंदना पूजा करने के बाद she used to look after the various chores of the palace and thereafter she would come into the darbar. So it is very important to understand these were the women who defied the prevalent social evils and at the same time they were all skilled in the art of statecraft, one. Number two, archery, good savari, shooting, archery, everything. They were skilled. They were trained from the very beginning of their life. Thanks. And their parents, especially their fathers, they believed in them. So women can do wonders if there is proper faith in them. And secondly, she is skilled from the very beginning. कौशल बहुत important है. धन्यवाद. Thanks. Nana ji say. On the aegis of centenary celebration of Delhi University, NCWeb has organized this 2-day seminar. I respect all of you for coming here and attending the 2-day seminar. I have gone through the content of this seminar and it is fully loaded with a heavy intellectual content, and in that content I am going to present a small thing, and that is about women in economy and women in finance. As told by Mala Madam, I am a banker, so that is a topic which is near to my heart, that women, they don't pay attention, though they are capable, though they are learned, they don't pay attention to finances and this important sector. So I thought I should speak on this. I will give few references from history also, but basically deliberate on the recent and current scenario, how women are performing in this sector. I take permission from Chair Manoj Srivastav ji, and I will try to finish in 10-20 minutes, and I allow you to stop me if I cross my timeline. The history of this nation, कि भारत वर्ष का जो इतिहास है, वो known written इतिहास, जैसे सिंधु जी ने अभी इतिहास की बहुत सारी बातें की, वो 5000 वर्ष से पहले तक जाता है. और इन 5000 वर्षों में महिलाओं का जो भी योगदान रहा है, इफ़ वी टॉक अबाउट वैदिक ईरा, पोस्ट वैदिक ईरा और भक्ति ईरा और बुद्ध जैन, वॉट एवर ईरा और वॉट एवर टाइम पीरियड यू वॉन्ट टू रिफर, women have performed wonderfully everywhere in each sector. But in our civilization, in Indic civilization, in Indic perspective in Bharat, women were more focused, they were more focusing on the upbringing of their children, on their families, and I will say, as in today's terms it is called unpaid care work, but I will term it as it was their investment in human capital development and human capital building. So it should not be overlooked about, and it should be given due respect, and I would further say it should be counted in the GDP also. If a woman, what she performs for her family, if it is counted in GDP, our GDP will increase at least by 35 to 40%, I am sure. So when we talk about the history, in Vedic era, we see the in that period, whatever literature, whatever scripts are available, they are fully loaded with the developed civilizations, references,
about science, about Ayurveda, about yoga and what not. कौन सा भी आप समय लेंगे, कौन सा भी आप टॉपिक लेंगे तो वैदिक इसमें उसके रेफरेंसेस मिलते हैं और वो रिटन डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब उसके कई हजारों वर्ष पहले ये सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट होती आई है। वेदों की बात करेंगे तो वेदों के जो ऋचाएँ लिखी है उसमें भी 60-64 ऋषिकाओं के नाम हैं, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन महिलाओं का जो योगदान रहा है, it is in political way, in administrative, in governance, in religion, in each aspect, in each sphere of the life. Sindhu ji in her forceful presentation talked about history, warfares, governance और राजा रजवाड़ों की और रानियों की बात उन्होंने की है। लेकिन भक्ति का भी अब अगर हम मूवमेंट लेंगे तो उसमें भी शैव हो, वैष्णव हो, वारकरी संप्रदाय हो, कौन सा भी आप संप्रदाय ले, महिलाओं का बड़ा योगदान उसमें रहा है। Likewise, in the field of education, science, social upbringing, literary contribution of women, it is immense important that women has done a lot. And why I say कि economic sector is important, because women have contributed in economic sector. Even now they are performing, and even then, मतलब in previous years also, they have performed well in this sector. This sector is important for nation. It is for development of nation. Economic development is the major best parameter of the development. But it is important for women, for gender equality, for women empowerment, and in turn or at last, women empowerment is family empowerment and social empowerment. So economic sector is important for everything. How I see women in this sector, they are there as consumers, they are there as investors, they are there as employees, they are there as employers also. When we talk about consumer, they go to the market and they decide on the product which is to be taken, at what price is to be taken. That means they have economic understanding, financial literacy imbibed within them. So you will have to galvanize a bit to that and go in the advanced stages of investments and all these things. But basically, Indian culture is saving based culture. So women are the best part of that culture, and they are they are looking to saving more than consumption. So as a consumer, women play an important role. Even now in today's days, when we order something from Amazon or Swiggy also, women are forerunners as a consumer. When we talk about investors, as I said, कि women are best savers, वो save करते हैं. One small example I will give about Jan Dhan Yojana. During this pandemic, government gave some 500 rupees grant to people, those who have opened Jan Dhan accounts. But that means lower strata of economic income, those who are government credited 500 rupees. But when I saw in my bank's figure, some 658 crore were transferred to the accounts, Jan Dhan accounts, which were held in our bank, Bank of Maharashtra. But though they were only meager amount, it was a meager amount, 500 rupees, after year end or a year, out of that 658 crore, 252 crore were lying in the bank accounts still there. So women are good investors, they know how to use the money, so that is one important part. After the education and skill development, women have entered into labor force and they are working as employees. I guess mine is third or fourth generation of the women, those who are going outside and serving somewhere. And in unorganized sector, huge number of women. If we say that there are some 34% of the population, women population is in the age of working age of the women. Out of that, 40%, 50% women are working in unorganized sector. But in the days of startups, when I see women are leading so many startups, they are going in new ventures, I find they are developing themselves and they are presenting before the society as role models, and they are coming in the leadership roles. And
And this is not a case of recent past, but in ancient times also, when there was a Gurukul Paddhati of education. In that time also, Guru Mata, matlab wife of a Guru, she was looking after the administration of the total ashram, and she was giving responsibility of imbibing life skills and life values like spirituality, religion, philosophy on the students, those who are taking admission in a way in that Gurukuls. So since then they were engaged in economic activity in a way. They may not be paid for that because it was a part of the system, and in our Indic culture, man and women are not looked at separately. They are looked as a unit. Husband and wife are looked at as a unit, and hence they are the base of a family structure. So ये पत्नी का इनकम, ये पति का इनकम है, ऐसा कभी हमारे यहाँ काउंट नहीं होता था. सेम लाइक इट वॉज लाइक इन फैमिली बिजनेसेस. हम जानते हैं कि जैसे कुम्हार है, वो कुम्हार जब मिट्टी को करता है और चक्के पे अगर कुछ उसको बनाना है तो उसकी वाइफ उसमें पानी डालने के लिए या पैरों से वो मिट्टी को नरम करने के लिए खड़ी रहती है. एग्रीकल्चर इज द बेस्ट सेक्टर वेयर 40% women are working in agriculture. You take any type of trade, family based trade for that matter, कोई डेयरी वाला होगा, महिला उसमें गाय का दोहन करेगी, दूध निकालेगी, बेचेगी, ये सब चीज़ें महिलाएं करती आई है. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज नॉट काउंटेड in money terms and in the terms of respect which should have been given to them. That's why महिलाएं हमारे पास कुछ करती नहीं है, ऐसा महिलाओं को भी लगता है. They don't have that confidence in their mind, and society even doesn't look at their contribution in the economy or in the growth or in the development of the nation. एग्रीकल्चर की यानी खेती की शुरुआत ही महिलाओं ने की है, और आज भी 40% महिलाएं खेती में काम करती हैं. इससे अलावा टीचिंग हो, स्टिचिंग हो, नर्सिंग एंड केयर टेकिंग हो, डाइंग एंड प्रिंटिंग हो, वीविंग, गारमेंट सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो परंपरागत महिलाओं ने उसको नर्चर किया है, उनको कैटर किया है, उनको आगे बढ़े. आज की भी अगर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वीवर्स जो जितने भी हैं उसमें आज भी महिलाएं आपको ज़्यादा मिलेगी. इन नर्सिंग सेक्टर महिलाएं ज़्यादा मिलेगी, इन टीचिंग सेक्टर महिलाएं आपको ज़्यादा मिलेगी. तो शुरू से ही महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में और अर्थव्यवस्था में रहा है. कुछ पहले के भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि 3rd and 4th century women were engaged and busy in trading of goods. तभी भारतीय संस्कृति, भारतीय ट्रेडर्स का ही देश था, तो ट्रेडिंग में उन्हें वैनेकिनीय ऐसा उसका टर्म था कि ए वुमन हु इज इन ट्रेडिंग शी वाज कॉल्ड वैनेकिनीय. In 11th century there are references the Goravi, that means the women those who are doing management of a temple. They were allowed to accept donations for the temple, and at that time the temple was the center of activity in villages, or they were managing everything through temples. So that was an important post in a way, and they were called Goravi. Independently महिलाएं ट्रेडिंग करती थी. जब जहाज़ों में माल डाल के, चीज़ें डाल के जब जहाज़ मूव होता था, at the time of that time also they were in trading through sea route or silk route, whatever route you can say, they were engaged in that. They were looking after the trade management, they were loading, uploading, unloading, and quality maintenance they were looking after. But why their contribution is not on record? जैसे सिंधु जी ने कहा कि जो हिस्ट्री, दैट मीन्स हिज स्टोरी ऑलवेज, इसके कारण हिज स्टोरी हमेशा लिखी गई है, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इतिहास हो, चाहे संस्कृति, चाहे लिटरेचर हो. इसलिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत बार नज़रअंदाज किया गया, उसमें लिखा गया नहीं. एंड वुमेन्स रोल इन द बिजनेस, फैमिली बिजनेस वॉज अ पार्ट टाइम जॉब. They were looking after the family and then sharing their responsibility in the businesses. So they were never in the decision making process, and they were in supportive roles
that may be the reason for not being counted the contribution of women in the field of economics and in the field of finance. आज भी जब ऐसे कुछ कानून बने हैं कि हर MNC के हर कंपनी के बोर्ड पे एक महिला होनी चाहिए, तो even though today also when women experience in family business differs widely because of their social strata, cultural background, economic background, their institutional background and so on. As of now, as per current scenario, women contribute 18% in the GDP of our country, of our nation. So that is, on an average, if you see any statistics, women in politics, women in job, women in contributing in GDP, it comes to 18 to 20% only. When you talk about labor force participation of women, it is also same like 17 to 18%. 27% of adult women, those who are in India, they are in the working age, and that this figure is much below than global average of 40%. 34% of women still work in unorganized sector. They are small traders, artisans, home-based, they are running home-based enterprises, they are in food processing, they are in agri-based processing, etc. etc. And services sector में भी है, जैसे household maids हैं, या nursing में है, home foster care, इन सब चीज़ों में है. Now, in the recent days or in today's context, BFSI sector, to the sector which I belong, that is banking, financial services and insurance sector, women are doing very wonders in this sector. Finance minister being women, then many banks headed by women, mutual fund, 8% of the fund managers are women. Out of 399 fund managers, 32 are women. HDFC की MD रेनू सूद है, जरीन दारूवाला CEO of Standard Chartered Bank है, Praveena Rai she is CEO of NPCI, National Payment Corporation of India. What I am telling and mentioning these names because when we compare the situation, position of Indian women with others, सिटी बैंक जो 200 साल पुरानी बैंक है, जिस बैंक की ब्रांचेस 50 देशों में है, ऐसे इतनी पुरानी बैंक की CEO जेन फ्रेजर तो 2021 में पहली बार कोई महिला उसकी CEO बनी है. जिस प्रगत देश करके अमेरिका की हम बात करते हैं, एडवांस रिच एंड पावरफुल नेशन अमेरिका, उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 2021 आना पड़ा, तब कमला हैरिस जाके उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी. In this background, why India can perform in all sectors whenever the Indian women were given chance, given an opportunity. मैं बीच का जो 1500 वर्षों का काल है उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें महिलाओं के ऊपर बहुत सारे बंधन डाले गए, उनको चौखट में बंद किया गया, एजुकेशन स्टॉप किया गया, एंड दे वर डिनाइड द राइट एंड दे वर डिनाइड द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. आई नो दैट. लेकिन ये हो पाया, इसका कारण मुझे लगता है, इफ़ वी लुक एट आवर कल्चर, इंडिक सिविलाइजेशन, आई फाइंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स which help and support women, and because of that today's women are rising like stars in not only in our nation but in global south or whatever you say, on global parameter they are doing well. Cooperative is an important sector. वहाँ पर cooperative banks है जिसमें only women cooperative banks also है. Nivedita Sahkari Bank was there, Mandeshi Bank was from Satara, Seva Bank from Gujarat, Gandhinagar. You must have seen and you must have tasted Lijjat Papad. That Lijjat Papad was a big cooperative which gave employment to 43,000 women, and it was started by Jashwanti Ben Popad. Amul is the another successful model, and which is being successful because of contribution of women, because at the level of milk production they were helping women, they were training women, and they were engaging women in that. And as of now in Amul there are 40 lakh women engaged, and they are associated with Amul also. Yeah, thank you.
I will not go more into or more data, but if we talk about startups, in today's language, if we talk, in startups, 20% leadership role, 20% women are in leadership roles. शार्क टैंक्स की आपने शोज वगैरह देखे होंगे, उसमें भी अभी भारतीय महिलाएं आना शुरू हुआ है. यूट्यूब स्टार जिसे कहते हैं, यू कैन गूगल एंड सर्च, रचना रानडे. She is having her own net worth. She is a young lady of around 40 years. Her own net worth, she is taking financial literacy classes on her YouTube channel, and $1,90,000 is her own net worth. What women make successful in this sector, BFSI sector or economic sector? Her talent, dedication, enthusiasm, patience, perseverance. Because of that, women are getting successful in this sector. But we need to recognize, reduce their burden of work, which is a बोझ on their whole, मतलब household काम का बोझ है वो कम करना चाहिए, and redistribute that between family members. That is important. If we talk about SDGs, if we have to attain all these SDGs 5, 1, 10 about gender equality, about poverty alleviation and all, 2030 is the deadline. So the theme of 8th March 22 was gender equality today for a sustainable tomorrow. And economic sector is one sector which can help to achieve all these goals in big way. My last point is that, but on this background, still why women are backward in economic field or in this sector? That is lack of education, skill, family support, and lack of financial opportunities they get in the society from banks. Even today, 22.5% credit goes to women and 78% goes to men. And why it is important? Because it is positive for our self-esteem, it improves our self-care, it enhances self-empowerment and well-being. And the one final point is that why we can do this whenever we got opportunity for coming ahead and going ahead, because of the inclusive culture, which is the Indic culture and which is our heritage, oneness and Ekatma Manav Darshan, in which there is no clash between man versus woman, but it is a unit and we go hand in hand. We need to support each other, and it is our responsibility to build on these principles and correct the historical mistakes which I have done in last 1500 years. I wish you all a huge success, and thank you NCVEC for giving me opportunity to talk on the women in economic sector. Thank you so much. ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरह, जहाँ पर कि 1970 के दशक में एक गॉडेस आंदोलन चला था, गॉडेस मूवमेंट चला था, भारत को नहीं चलाना पड़ा. भारत को ये भी लाभ रहा कि इसे एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन की तरह कोई द वीमेंस बाइबल जो है अब जाकर नहीं लिखेंगे. भारत को जो है माल्टिडा जॉसलिन गैस की तरह कोई स्त्री ईश्वर का विचार जो है 20वीं सदी में 21वीं सदी में आकर नहीं देना पड़ा. भारत के पास देवी की संकल्पना थी, शक्ति की संकल्पना थी, और वो इस रूप में महत्वपूर्ण थी कि जिस समय एथेंस में हर स्त्री के साथ एक पुरुष अंगरक्षक, एक काइरियोस जो है रखने की परंपरा थी. जिस समय ये परंपरा वहां चल रही थी, उस समय भारत में देवताओं की रक्षा के लिए देवी को नियुक्त किया जाता था. यानी ग्रीको रोमन समय में स्त्री की आयु गणना की शुरुआत उसके विवाह के दिन से होती थी, और रजस्वला होती ही लड़की ब्याह दी जाती थी, और रोमांस जो है शायद ही कभी कोई कारक बनता था शादी. उस समय भारत में, या उससे भी बहुत पहले भारत में
पार्वती जो हैं अपने मनपसंद वर को उत्तीर्ण करने के लिए अपने परिवार की इच्छा के विपरीत जाकर तपस्या करती हैं और उसे जीतती हैं। तो शेक्सपियर को लगता होगा कि फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन, लेकिन भारत में तो ये शक्ति की बात थी, दुर्बलता नहीं थी स्त्री। जिस समय प्लेटो ये बता रहे थे कि स्त्री का मुख्य कार्य बच्चे और वो भी लड़के पैदा करना, जिस समय ग्रीस में पत्नी अपने घर में हो रही उस सोशल गैदरिंग में हिस्सा नहीं ले सकती थी जिसमें आदमी, जिस समय वो बाजार नहीं जा सकती थी, और प्लेटो के विचार से सिर्फ पुरुष ही जो है सीधे ईश्वर के द्वारा बनाए गए थे और सिर्फ उन्हीं के पास आत्मा थी। जब अरिस्टोटल जो है स्त्री को स्वभाव से ही डिफेक्टिव बता रहे थे और उसकी परिभाषा अपूर्ण पुरुष के रूप में कर रहे थे, इम्परफेक्ट मैन, अ वुमन इज अ इम्परफेक्ट मैन, ये उनकी परिभाषा थी कि पुरुष जो है किसी खास सामर्थ्य के चलते पुरुष है और स्त्री किसी खास असामर्थ्य के कारण स्त्री। ये उनका सिद्धांत था कि आदमी औरत के ऊपर ठीक ही चार्ज ले लेता है और पुरुष शासक है और स्त्री शासित होने के लिए है। और अरस्तु जो है उनके शब्दों में स्त्री पालतू पशु है। उस समय भारत में पुरुष पाशविक मानसिकता को परास्त करने वाली महिषासुर मर्दिनी की पूजा चल रही थी, और वो महिषासुर मर्दिनी थी कैसे? उसके पास समस्त देवताओं के तेज का संपुंजन था, और न केवल यही था बल्कि सारे देवी देवताओं के अस्त्र जो हैं उससे संपन्न थी। तो जब प्लेटो ये सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे कि जो पुरुष कायर है या अपवित्र है वो अगले जन्म में जाकर स्त्री बन जाता है, तब स्त्री की पवित्रता और स्त्री के देवित्व और उसके शौर्य को स्थापित करने वाली दुर्गा की संकल्पना हमारे यहाँ। जब अरस्तु की नजर में स्त्री की परिभाषा एक इनफर्टाइल मैन की तरह थी, एक अनुपजाऊ पुरुष की तरह, तब भारत में उसे मातर जगतोखिलस्य कहा जाता। जिस समय एथेनियन ये लिख रहे थे लेखक कि सबसे अच्छी स्त्री वो है जिसके बारे में सबसे कम सुना जाता, उस समय से सहस्त्रों वर्ष पहले भारत में लोपामुद्रा, अपाला, अदिति, रोमशा, जुहू, वागम्भृणी, विश्ववारा, शची, शाश्वती, सूर्या, इंद्राणी, इंद्रस्नुषा, सार्पराज्ञी, मैत्री, गार्गी, शची, घोषा, ममता, दक्षिणा, श्रद्धा, उर्वशी जैसी कितनी ब्रह्मवादिनियां हुई थी और कितनी ऋषिकाएं हुई थी। जब वे स्त्री को सोललेस क्रीचर के रूप में परिभाषित कर रहे थे, तब हमारे यहाँ स्त्री को वरा, मेधा, सरस्वती, पुष्टि, नित्या, ईशा, नियता, ध्रुवा का। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ देवी के बारे में कहा जा रहा है? और देवी जो है स्त्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, तो इसलिए तब ये भी कहा गया कि जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु पूरी तमपय तक, सारी स्त्रियां जो हैं वो तुम्हारी मूर्ति हैं। क्या आपको लगता है कि जिस ग्रीको रोमन साम्राज्य का मैं बता रहा हूं, वो जो है स्त्री का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा था और हम भारत में बैठे हुए स्त्री का डीफिकेशन कर रहे थे, दैवीकरण कर रहे थे, और दोनों में ही स्त्री के मानवी होने का, स्त्री के पार्थिवी होने का डिनायल था। तो मैं आपको उस स्त्री की ओर ले चलता हूं जो पार्थिवी थी, डॉटर ऑफ द सॉइल, सीता। सीता जो है उससे कष्ट भोगती कितनी भारतीय स्त्रियों ने तादात्म्य किया। क्रस्तनुसी से जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुणशेनी। केश जो हैं, केश नहीं रह गए, जटा हो गए। और तपस्विनी के सीता रूप को देखकर मुझे गोदान की धनिया याद आती है, जो
प्रेमचंद ने बताई थी कि उलझे चुपके रूखे केस, सड़क पर गिट्टी तोड़कर जो मजदूरी अपने माथे से पसीना पहुंचती है, उसके श्वेत बिंदुओं में सीता का तप चमकता है। ये पता नहीं किन लोगों ने सीता की एक बड़ी फ्रिजिड से इमेज निर्मित कर दी। रावण भी उसी गलतफहमी में था। वो भी सोचता था कि सीता कोई सब जीरो लेवल की स्त्री होंगी। रावण को पता नहीं था कि पार्थिवी किस माटी की बनी। सीता के वचनों की तापानुभूति जब उसे होती है, तब उसे पता लगता है कि यह तो जो है उसे राम की प्रतिद्वंदिता तो छोड़िए, राम की असमकक्षता में खड़ा कर रही है। तो सीता यदि शीतल भी हैं तो किसी व्यक्तित्वोन्मूलक तरीके से नहीं है, किसी डीपर्सनलाइजिंग तरीके से शीतल नहीं है। कभी रामायण के अयोध्या कांड के जो वाल्मीकि ने लिखे है, उसके 4 सर्ग पढ़िए, आपको सीता के तेज का पता लगेगा। रावण के विरुद्ध तेज है, लेकिन वो जो 4 सर्ग हैं वो उस समय के हैं जब सीता को जो है वनवास ना जाने के लिए राम कह रहे हैं अयोध्या कांड में कि मैं चला जाता हूं, तुम यहीं रुको। तब सीता राम को क्या सुनाती हैं, क्या खरी खरी सुनाती हैं, उनकी दृढ़िमा, उनके भीतर का लोहा जो है तब समझ में आता है। तो वो सीता जो रावण के सामने अपनी अर्यमा को कायम रख सकी, वो सीता कोई साधारण वैसी स्त्री नहीं थी जैसी वीपिंग इमेज उनकी बना दी गई है। उनको कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं हुआ अपहरण के बावजूद। और इसीलिए मुझे लगता है कि विवेकानंद ने जब कहा था कि हम सब सीता के बेटे हैं, तो बहुत ही सही कहा। अब जमीन से जुड़ी हुई एक दूसरी स्त्री की मैं बात करता हूं, राधा की। राधा जो है, उन्होंने भारतीय इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया, क्योंकि हम लोग भारतीय इतिहास की यशस्वी स्त्रियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियों का क्या इंटरेक्शन इतिहास के साथ रहा है, ये भी कभी देखना चाहिए। मध्यकालीन आक्रमणों ने जब स्त्रियों को घरों में बंदी होने और पर्दा व घूंघट करने को मजबूर कर दिया था, राधा आई और उनके रास ने जो है स्त्रियों को मुक्त किया। तुलसी ने भारत के पुरुष को संभाला था, सूरदास ने भारत की स्त्री को। जिस दौर में गौकशी हावी हो चली थी, उस दौर में मानुष हो तो वही रसखान वाली पंक्ति याद है आपको? बसो नंद की धेनु मझार, वो नंद की धेनु के मध्य बसने की बात मनुष्यता की पहचान के रूप में रसखान स्थापित क्यों कर रहे थे उस समय, जबकि गौकशी इतनी हावी हो गई थी। तथाकथित आधुनिक साम्राज्यवाद जो है उससे लड़ने में एक भूमिका काली ने अदा की है। मेरी एक पुस्तक जो है अपराजिता, उसमें मैंने बहुत विस्तार से उसका वर्णन दिया है कि काली जो है किस तरह से अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ी। और मेरा यदि YouTube चैनल आप लोग धर्मनेत्र देखें तो उसमें काली कॉम्प्लेक्स करके एक पूरी सीरीज है जो इसी विषय में है। तो वो तो वहाँ आधुनिक युग में काली ने वो भूमिका अदा की, लेकिन मध्यकालीन साम्राज्यवादियों से संघर्ष में राधा की भूमिका कम नहीं थी। राधा जो है कटुताओं और नफरतों के उस दौर में जो है मधु संचय कर रही थी, भारत की जीवन शक्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए। राधा का उदय जो है वो इतिहास से टूटी हुई स्त्री को सनातन की सांत्वना का उदय है। जब इतिहास की उदास छायाएं जो है गहरी होती जा रही थी, तो राधा जो है अचानक एक ज्योति शिखा की तरह प्रकट हो जाती है। राधा प्रेम की मूर्ति हैं, सीता, सती, पार्वती भी प्रेम करती हैं, लेकिन वे पत्नी भी। राधा हैं जो सिर्फ प्रेम है, और सबसे ज्यादा खतरे भी जो हैं वो राधा के प्रेम में। ये उपाधि मुक्त प्रेम है। उपाधियों को सामाजिक स्वीकृति मिलती है और एक आश्वासन होता है। राधा को वो आश्वासन भी नहीं है। तो सीता के दुख ने जहां राम का चरित्रोत्थान किया था, राधा के दुख ने कृष्ण का किया। और दोनों अवतारों की ये मूल प्रेरणा शक्ति जो है वो नारी की वेदना है। एक तीसरी जो स्त्री है वो है द्रौपदी। द्रौपदी को कहा जाता है कि वो यज्ञ से उत्पन्न है, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि उनका पूरा जीवन ही एक यज्ञ है।
परशुराम को भारत में अवतार माना गया क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को, अनाचारी जो राजा थे, उनसे पृथ्वी को मुक्त किया। लेकिन द्रौपदी के अवतार का प्रयोजन भी वही है, अनाचारी राजाओं से पृथ्वी को मुक्त करना। यह आकाशवाणी उस समय होती है। तो जैसे सीता रावण का असल प्रतिपक्ष है, द्रौपदी दुर्योधन का असल प्रतिपक्ष। और उस महान स्त्री के पतिव्रत के बारे में लोग जानते कितना है? यानी महाभारत में जब सत्यभामा उनसे कहती हैं कि ये तुमने कौन सा वशीकरण मंत्र चला दिया है कि ये सब के सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उस समय वो अपने पतिव्रत के बारे में बताती है कि वो क्या है और उस पतिव्रत में क्या है, उसकी किस तरह की परिभाषा है, उसको हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं गया। वो कहती हैं 88,000 स्नातक गृहस्थों का भरण पोषण, 8,000 विद्वानों का भोजन, 10,000 ऊर्ध्वरेता यतियों को अन्न, वेद ज्ञानियों को अग्रहार अर्पण, भोजन वस्त्रादि, सेविकाओं का कलावर्धन, आवश्यकताओं और प्रत्येक की ड्यूटीज की जानकारी, घोड़ों और हाथियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्त सेवकों के कार्यों की देखभाल, पांडवों व महाराज के आय व्यय और बचत का हिसाब, जो अभी आप बता रही थी इकोनॉमी का, कुटुंब का सारा भार उठाना, धर्मात्मा पतियों के वरुण के भंडार और परिपूर्ण सागर के समान अगम एवं अक्षय भरे पूरे खजाने की पूरी और अकेले जानकारी रखना, ये सब उसके पतिव्रत का अंग है। उसको जो है पता नहीं किस तरह से किन लोगों ने एक ऐसी स्त्री के रूप में परिभाषित कर दिया कि उसकी कटुक्ति के कारण जो है महाभारत हुआ। पूरे महाभारत में जो है उस कटुक्ति का कहीं उल्लेख नहीं आता कि अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन उस रूप में उसको प्रचारित कर दिया। जबकि जो है उस राजसूय यज्ञ से लौटकर जो है जो बात बताता है दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को, उससे पता लगता है कि उस स्त्री की महानता क्या थी। वो कहता है कि राजन, उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन न करके इस बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और बोने से लेकर सब मनुष्यों में किसने खाया है और किसने अभी तक भोजन नहीं किया। वो एक ऐसी स्त्री है जिनकी पूरे महाभारत में लोक का ध्यान रख के चलती है, समाज का ध्यान रख के चलती है, साम्राज्य में सबसे अंत में भोजन करती है। उस तरह की स्त्री को हमारे यहाँ इस तरह से कर दिया गया। तो इतिहास से कुछ खेल ऐसे खेले। और एक चौथी स्त्री जो कि हम सीधे इतिहास से ही उठाएं, वो है मणिकर्णिका, वो है लक्ष्मीबाई। कर्ण आभूषण काव्यात्मक सा नाम, लेकिन उसका नाम बदल के लक्ष्मीबाई कर दिया गया, जिसने लक्ष्मी को ठुकराया, ऐश्वर्य को ठुकराया, भोग को ठुकराया और लक्ष्मी को उसके नए अर्थों में प्रतिष्ठित किया, या कहें कि उसके मूल अर्थ में पुनर्स्थापित किया। लक्ष्यति पश्यति उद्योगिनम, उसका पूरा जीवन कर्ममय था, उसका पूरा जीवन उद्योगी था, इसलिए वो लक्ष्मी थी। सहस्त्रभुजा के अर्थ में लक्ष्मी थी। और जब उसने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो वो वसुधा और पार्थिवी के अर्थ में लक्ष्मी हो गई। जीवन में जैसे रणा लक्ष्मी होना था, उसका एक दूसरा नामकरण जो हुआ वो भी भवितव्य के सारे संकेतों से भरा हुआ था। और जो है उसे झांसी तक ही सीमित करने की एक बौद्धिक चालाकी मैं आजकल के इतिहासज्ञों में देखता हूँ। जैसे राधा को जो है ब्रज तक सीमित कर दिया गया था, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है राधा को के बारे में कहता है कि वो भारतेश्वरी। तो ऐसे ही जो है रानी लक्ष्मीबाई भी जो है भारतेश्वरी थी, और वो झांसी से इतनी एकाकार कर दी गई कि लोग ये भूल ही गए हैं कि वो तो वाराणसी में जन्मी थी। मुक्ति के इस स्थान में जन्मी स्त्री के मन में मुक्ति की एक अदम्य इच्छा रही हो, यह स्वाभाविक थोड़ी था। जिन लोगों ने 19वीं सदी के वाराणसी को जो है अंधविश्वास में फंसा हुआ और पिछड़ा हुआ दिखाया है, आपको याद होगा 1968 में एक फिल्म आई थी संघर्ष, उसमें ऐसे ही दिखाया। वो ये भूल जाते हैं कि 1828 में ये वीरांगना जो है एक ब्राह्मण परिवार में जो जन्मी थी, वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक सीख रही थी, जो अभी आप बता रही थी सिंधु जी। वो ये सीख रही थी लड़की। जिस भारतीय समाज की बदनामी स्त्री व्यक्तित्व के लिए दमनकारी बताकर की जाती है, वहीं ये मनु जो है
उस निंदा के विरुद्ध एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है और आग्रह करती है कि तोता चश्मे की तरह जो अंग्रेजी लेखकों के स्वार्थपूर्ण नजरिए से आप इतिहास को न देखें। आपको यदि पढ़ना ही है तो प्रोफेसर कैथरीन ह्यूज की जो है पुस्तक पढ़ें, एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन। उसमें वो बताती हैं कि तत्कालीन विक्टोरियन इंग्लैंड में जो है सेपरेट स्फीयर्स कैसे होते थे, पुरुष और स्त्री की अलग अलग दुनिया। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो कैथरीन ब्लैंक है, कैरोलिन बिंगली, उसके शब्द याद करें वो क्या कह रही थी कि अ वुमन मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग एंड द मॉडर्न लैंग्वेजेस। और यहाँ ये मनु थी, म्यूजिक नहीं सीख रही थी, सिंगिंग नहीं, डांसिंग नहीं, ड्राइंग नहीं, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, फेंसिंग। और ये किसी राजवंश के विशेषाधिकार के आधार पर नहीं सीख रही थी वो, क्योंकि वो पैदा जो है एक साधारण परिवार में हुई थी, ब्राह्मण परिवार में, जो कि पेशवा की अदालत में, बिठूर के पेशवा की अदालत में काम करते थे उसके पिता। इसलिए इतिहास का ये संदेश है कि जिस आदि पुरुष को की तरह, जिसे आदि पुरुष की तरह हमारी परंपरा में स्वीकार किया गया, पुरुष की तरह, आदि पुरुष की तरह, उसी का नाम जो है इस लड़की का बोलचाल का नाम हो मनु। और ऐसी रानी लक्ष्मीबाई को मैं आज देखता हूं, आप लोग भी जरा गौर करें, टाइम पत्रिका में विश्व की टॉप 10 डेयर डेविल वाइफ्स के रूप में उनकी गणना की गई। टॉप 10 डेयर डेविल वाइफ्स। ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इस लिस्ट में रूपर्ट मोर्डॉक की बीबी है शामिल, वेनी डाइंग, जिसकी ख्याति यही है कि जब उसके पति पर जो है कोई केक फेंकना चाह रहा था तो उसने फेंकने वाले को दौड़ा दिया। उनके साथ आप रानी लक्ष्मीबाई को रख रहे हैं। टाइम पत्रिका, रूजवेल्ट और ओबामा की पत्नियों की सूची में रानी लक्ष्मीबाई। टाइगर वुड्स की पत्नी जो है एलेन नॉर्डेग्रेन, वो भी उसी सूची में, जिन्होंने अपनी पति की बेवफाइयों से तंग आकर जो है तलाक ले लिया और $100 मिलियन भी ले लिया। उनके सामने रानी लक्ष्मी। कमाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को कुछ ऐसे खेल देखना चाहिए जो कि आजकल के समय में खेले जा रहे हैं इन यशस्वी स्त्रियों के साथ। यानी आप जिस रानी लक्ष्मीबाई को जीवन भर बंदी नहीं बनाया जा सकता, उससे अपनी फैंटासी का कैदी बनाने की जो है कोशिशें इस समय चल रही हैं। जॉर्ज मैकडोनाल्ड फ्रेजर का एक उपन्यास है, फ्लैशमैन इन द ग्रेट गेम। उनकी पूरी उपन्यासों की सीरीज है इनफैक्ट, फ्लैशमैन के नाम से, जैसे बैटमैन और दूसरे के नाम से चलती है, वैसे फ्लैशमैन के नाम से उनकी फ्रेजर की उपन्यासों की सीरीज है। तो उसमें फ्लैशमैन इन द ग्रेट गेम में फ्लैशमैन जो है झांसी पहुंच जाता है, रानी लक्ष्मीबाई से मिलता है, उनसे जो है ब्रिटिश अत्याचारों की शिकायतें सुनता है और उनको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। फिर एक और उपन्यास आया, फ्रेंच उपन्यास, अभी कुछ दिनों पहले, लॉ ऑफ फेमस सेक्री। तो वो लॉ ऑफ फेमस सेक्री का मतलब है पवित्र औरत, पवित्र स्त्री। तो वो मिशेल डे ग्रीस ने लिखा है और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है कि उनका ईर्ष्यालु पति जो है उनको बंदी बनाए रखा, 11 साल तक उनको अपने घर में कैद रखा। यानी जो वो अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज कर रही होंगी तो वो उसकी नज़र में घर में कैद है। और जो है उस स्त्री का हृदय जो है विभक्त था, क्योंकि जो है वो एक तरफ वो स्त्री अपने पति को देख रही थी और दूसरी तरफ जो है वो इस फॉरेनर के, इस फिरंग के जो है उसके मोह में भी थी। इस तरह से आज हमारी जो है उन देवियों का वर्णन हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि यदि हमें इतिहास को पढ़ना है तो ये जो गल्प रची गई हैं हमारी यशस्वी स्त्रियों के विरुद्ध, उनको ध्यान से पढ़ना होगा। हिस्ट्री शब्द जो है वो, उसके 2 उत्पत्तियां हैं। हिस्टोरिया जो जिससे बना है, हिस्टोरिया शब्द लैटिन भी है, हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भी है। लैटिन जो शब्द है उसका अर्थ होता है कथा, और जो है ग्रीक जो शब्द है हिस्टोरिया, उसका अर्थ होता है टू इंक्वायर, जानना। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप इन कथाओं के प्रति कितनी जिज्ञासा रखते हैं। प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव।
इस प्लेनरी सेशन को क्लोज करने से पहले लेट मी फर्स्ट लिस्ट आउट सम मेन टेक अवेज ऑफ दिस प्लेनरी सेशन। प्रोफेसर सिंधु कपूर ने हमें स्मरण कराया कि कैसे ऐतिहासिक रूप से स्त्री को भारतीय संस्कृति में सदा से महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, और उन्होंने ढेरों एग्जाम्पल लिए, माद्री, गांधारी से लेकर रुद्रम्बा तक। श्रीमती नयना सहस्त्रबुद्धे ने स्त्री के अर्थशास्त्र ज्ञान के ऊपर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि आज, हालांकि वैसे हमेशा से ऐतिहासिक रूप से स्त्री भारतीय संस्कृति में काफ़ी मुख्य भूमिका में रही हैं, लेकिन आज की डेट में भी स्टार्टअप्स में स्त्रियों की अग्रणी भूमिका है। उन्होंने एक हिज स्टोरी और हर स्टोरी के बारे में बात की, और शी गेव वंडरफुल टिप्स टू यंग गर्ल्स प्रेजेंट हियर ऑन हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। श्री मनोज श्रीवास्तव जी ने हमें रोमांचित किया जब वे पाश्चात्य संस्कृति व भारतीय संस्कृति में स्त्री की भूमिका के अंतर को इतनी खूबसूरती से वर्णन कर रहे थे, और फिर उन्होंने आज की पार्थिव नारियों, जिसमें सीता, राधा, द्रौपदी और मणिकर्णिका के उदाहरण दिए। भारतीय इतिहास की यशस्वी स्त्रियाँ इस प्लेनरी सेशन में मैं अंत में कुछ कहना चाहूँगी कि सोच को बदलें, सितारा बदल जाएगा, नज़र को बदलें, नज़ारा बदल जाएगा, कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिशा को बदलें, किनारा बदल जाएगा। इसके साथ ही तीनों मुख्य वक्ताओं का ढेरों धन्यवाद। और गीता मैम से थोड़ी सी शिकायत है कि 3 अतिथि अगर एक प्लेनरी सेशन में हैं तो हम कुछ मिस कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा सुनना था पर हमें उन्हें कट शॉर्ट करना पड़ा। अब एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना है पेपर प्रेजेंटर्स के लिए। टेक्निकल सेशन 1 10 मिनट बाद यही कॉन्फ्रेंस हॉल में है। टेक्निकल सेशन 2 रूम नंबर 2 पर है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है। सेशन 3 रूम नंबर 5 फर्स्ट फ्लोर एंड सेशन 4 रूम नंबर 4 फर्स्ट फ्लोर। तो आप उसी हिसाब से अपने स्थान पर पहुँचें। धन्यवाद। मैं दीपशिखा यादव मैम से निवेदन करूंगी कि वो आएं और हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर राकेश पांडे जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। Can you give me the list for the presenters who are present today? मैं आमंत्रित करती हूँ हर्षिता पांडे को कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन दें। उनका टॉपिक है विमेन, हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंगेजमेंट विद द ट्रॉमेटिक पास्ट। Even after Gandhi death, he was actively involved in South African politics. Mani Bean was greatly influenced by Gandhiji himself. His teachings of ahimsa, peace and satyagraha was followed by her throughout her life. At a very tender age of 13 years, she got involved and interested in the politics. Her father used to narrate all the developments and the upcoming challenges of the struggle. Hence, Mani Bean was introduced to the complexities of politics through the lenses of her father. In talking about her education, she studied in Indian High School and did her graduation in South African University and qualified for teacher. This is when she started in active politics. Her trademark orange sari is very known with everyone. She was very fluent in English and very articulated in her speeches and thoughts. In 1946, there were passive resistance and ghetto acts. She went to Asiatic Bazaar, organized women, and even prepared them to go to prison for the cause of nation. She helped in formation of Indian Women Support League and also collected fund for Transvaal Indian Congress. She went to jail multiple times. In one of the incidents, she sat on a seat reserved for a white person in a railway station. She was sent to jail for 3 months. Then she continued her fight against a Group Areas Act, that was an act which segregated colored people from the white people in a... Try to conclude it, because we have time limit. So Sita, in her various contribution to the nation, she one of the interesting activity I want to narrate is that she went to prison for attending a CRADOC. There were 4 activists who stood against anti-apartheid. There was a funeral organized for Sita. Sita went to attend the funeral. She was arrested. A senior official asked that even if
she said that they were united for the cause. She wanted the motto behind that human should live with dignity in the land of their birth. That was her motto. For a whole of her life, she led a very ideal life, simple life. Will be your honorary sir. So please. Thank you. Thank you. Everybody. And thank you NCBET for giving me this opportunity to come here and discuss my topic. Just a brief introduction about me. I am Harshita Pandey. I have completed my graduation from Miranda House and Masters also from Delhi University. And currently I am a PhD scholar from CRCS SIS JNU. So the topic of my presentation is Women, History and the Memory of Partition of India, Engagement with the Traumatic Past. So when we are discussing the footprints of women in the making of Bharat, why is it important to discuss partition? This is what my presentation talks about. So on the occasion of the celebration of 75 years of India's independence, Prime Minister of the country declared 14th of August to be observed as Partition Horrors Remembrance Day. And this is particularly important when we view this date from the feminist historiography point of view. So this is what my presentation is about. Because I don't have time, I'll rush through some of the things. So the partition of the country in 1947 is obviously an inhuman chapter of Indian history which can never be forgotten. But still, here after 75 years of independence, we are emphasizing on why partition should be remembered. And the horrors of the partition particularly should be remembered. And therefore, why this becomes important is because historiography, if we see it from the partition from feminist historiography point of view, we would see that history, which is what Sir John Seeley once said, that history is past politics. And when we refer history as past politics, we are definitely saying that history is never written in vacuum. It is all about the power dynamics, right? So women and their viewpoint have been neglected in the writing of history, and therefore partition, the studies around partition and the nation building, the Nehruvian legacy and the nation building, all of that, partition historiography is actually obsessed with this Nehruvian legacy and all of that, and the traumatic events and the emotional events that what women faced, the pride and shame, the memory that is associated with it, that is not emphasized in the writing of history. So this is my first point. I think the slides are not working. Okay, that's fine. So I'll just move ahead by saying that the commemoration of Partition Horror Remembrance Day is therefore important. Urvashi Butalia suggests that the history of partition completely neglects and does not fairly engage with the people who have gone through this turmoil. Gayatri Chakravarti's Spivak, this is particularly important for women जो हमारे यहाँ पे जो हम लोग यहाँ बैठे हैं सारी औरतें, हम समझ पाएंगे कि most of the things that we face, that is we use the adjective of silence, and women we are very familiar with silence. मतलब most of the things we are always हमारी माँ बोलती है, हमें सब मतलब बहुत सारे जो आसपास लोग होते हैं आपको चुप हो जाना चाहिए. So that silence is also very political. So this silence is there when we are talking about the feminist historiography, and the voices have been silent. The voices of women were not heard properly, and this is what feminist historiography points out. So I just like to conclude by suggesting that the engagement with the past, when E.H. Carr says that history is a continuous dialogue unending dialogue between the past and the present, this is what brings us to the importance of the Partition Horrors Remembrance Day, and this is why it is also important that feminist historiography should be, we should engage more with the feminist historiography, and I would just conclude by saying that. Thank you, and thank you for being patient listeners. Thank you. Monica, your topic is Women's Voices, Stories and Contributions in Ancient Bharat. Senator Chetan Meena, please be ready with your presentation.
Good evening, everyone. This is Monica Raj. I am pursuing PhD from Nalanda, Bihar. The title of my topic is Women's Voice, Stories and Contributions in Ancient Bharat. Today, the contribution of women is important in all fields. Women are the mainstay of the development of any country. They play an important role in the progress of the family, society and countries. Human civilization has come a long way from the Stone Age to the nuclear age. During this time, many ancient civilizations were born and spread in every corner of the earth. Some remained and some get washed away in the current time. According to Reber, women have laid the foundation of the first civilization and they have provided their level of life by holding hands to men, wandering to the forest and settled them in the house. Theoretically, in India, women have been given high status according to Hindu ideals. Women have been called better half, respect for motherhood in the specifically of Indian society. The divine power of the world, Durga, Kali, Lakshmi, Saraswati, etc. Women are considered the symbol of power, wealth, knowledge. That is why we express our reverence to the country by calling it Mother India. Woman is the most wonderful creation of the universe, which not only advances the family, but also destroys injustice. All the activities of the world are considered incomplete without a woman. The progress of any country also depends on the status of woman. The development of the country takes place very fast due to the movements of women along with men. Women in India have always raised their voice and talked about their rights and contributed significantly to the progress of changing India. Its image is visible in Indian history from time immemorial, whether it is all about the mother worship in the Indus period or it is all about Queen Hema of Halyana dynasty, Ghosha, Apala, Vishwara among Vedic women, Mahaprajapati Gautami, Queen Yashodhara, Amrapali among Buddhist women, Queen Karuvati, Princess Padma, Princess Sadumitra of Mauryan women, Queen Dhruva Devi, Rani Prabhavati of Gupta dynasty, Rudradama Devi of Kakatiya kingdom, all have made their glorious presence in the ancient India through their works. The status of women in India has not always been equal. There have been many ups and downs in the status of women from the Vedic age to the modern period, and there have been corresponding changes in their rights. The position of women was strong in the Vedic age. They were respected in the family and society. They had the right to education. They had equal rights in property. They used to participate freely in Sabha and Samitis. However, there are some such statements in the Rig Veda which are seen in opposition to women. But after the Vedic period, gradually the rights of women got limited and further later on, for their own rights, they had to demand rights from the male-minded system. Later on, the Buddhist movement also got to give age to women's rights. Please conclude. In this way, we see that the role of women in ancient India has been changing according to the time and the ruler. Despite all this, many such women have kept their role prominently in history. Since ancient time, women have got equal rights and respect with men in India. That is why women have an important place in Indian culture and religion. Thank you. थैंक यू सो मच मोनिका, आपका मंच पर स्वागत है। सर, आपका टॉपिक है Vedic wisdom and women, the significance in contemporary perspective. French Studies at Department of Germanic and Romance Studies, Delhi University. I am going to present my topic Vedic wisdom and women, the significance in contemporary perspectives. This paper is about to explore the different aspects of Indic studies related to the contributions of women to Indian culture along with the perspectives of looking at women's history. In this paper, I will discuss the role of women by emphasizing the Vedic, Sanskrit, folk culture and textual traditions of India. It will encompass a view of Indic literary theory and thoughts shall be explored regarding the women's history and its contribution in society. Keeping in view, the paper has two objectives. One, to highlight the role and status of women in Vedic period in India, and second, how Vedic wisdom can transform through a woman of contemporary society. India is the land where people believe in ideology of Ardhanarishwara,
that supports our Vedic and spiritual thoughts. The Ardhanarishwara form of Shiva and Parvati signifies the consort of goddess Parvati and Shakti and Shiva, which represents a constructive and generative power, and social aesthetic symbolizes male and female principles cannot be separated. As we can observe that the name before our goddess like Sita, Ram, Radha Krishna, Gauri Shankar, so it's very similar that we place the name of woman or the name of Shakti before the gods. So the role of woman is well recognized in Indian society from the very beginning. The Puranic Adi Shakti Adya is considered the beginning and is believed to take the visible form of the three Devis, but not before creating Alak. The formless Purusha that appears as the three Devas. This ancient cosmology is unique and can still stand the rest of time. An important feature for a contemporary world. The social interpretation of the culture, Sanskriti, traditions, Parampara and philosophy Darshana needs narrational perspective and integrative approach. That is Matristhapnik, Pratmak, Matriarchal and... Please read the conclusion. Yes. So, overall, I want to conclude in this paper that the female the female power or the concept of Shakti from Kashmir to Kanyakumari, as we also found 51 Shakti Pita across the country. Among these, Kamakhya, Gaya, Ujjain Shakti Pita recognized. Finally, I want to conclude that the concept of the Shakti or Devi from Vedic period to present time acknowledges the role and importance of feminine power in Indian culture and society, and it gives the message around the world about the respect and contribution of women in human life, as we can hardly find so much respect and worshipping women as a goddess. Even non-human beings like rivers and animals by the name of gods and goddesses in other parts of the world. Thank you. Thank you, Ketan. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस देश में स्त्री की आराधना शक्ति के स्वरूप में होती है, उस देश की प्राचीन संस्कृति एवं परंपरा में उसका योगदान कितना बृहत है, इसकी कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं। प्राचीन काल से भारतीय समाज के निर्माण में स्त्रियां प्रमुख आधार स्तंभ रही हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, ज्ञान, विद्वत्ता एवं व्यवहार कुशलता के द्वारा इन्होंने वैदिक काल से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योगदान तब और भी अतुलनीय हो जाता है जब वह जननी के रूप में अपनी संतान को इस मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। वैदिक काल से आरंभ करें तो हम पाते हैं कि स्त्रियों का स्थान इतना उच्च था कि इस काल की नारी को ब्रह्मा के रूप में रेखांकित किया गया। स्त्री ही ब्रह्म बहुविद, अर्थात ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ याज्ञिक कार्यों में सर्वोपरि नारी स्वयं विदुषी होते हुए अपने वंश को भी अपने गुणों से सुसज्जित करती है। वैदिक वीर नारी ने विद्वत्ता और आध्यात्मिक उन्नति का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी अनुकरणीय है। इस युग में अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने ऋग्वेद एवं अन्य वेदों की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया। इन्हें मंत्र दृष्ट नारियां कहते हैं। 24 ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र 224, ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र 224 हैं और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र 118 हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ऋषिकाओं का उल्लेख इस प्रकार है: घोषा बुधा विश्ववारा अपालो परिनिष्कृषत ब्रह्मजाया जुहुर्नाक्त अगस्त्यस्य सुसादिति इंद्राणी च इंद्रमाता च शर्मा रोमुषोर्वसी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च सास्वती श्री लक्ष्मी सार्वराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिता। इन ऋषिकाओं में सर्वप्रमुख हैं ब्रह्मवादिनी रूसा, अर्थात जिन्हें ब्रह्म और वेदों का ज्ञान हो। लोपामुद्रा, जो कि अपने हर्ष से हर जगह का वातावरण खुशहाल कर देती थी। तीसरी हैं अदिति,
जिन्हें समस्त देवताओं की जननी माना जाता है और ऋग्वेदिक मंत्र है अदितिर द्योर अतिर अदितिर अंतरिक्ष अदितिर माता सपिता सपुत्र विश्ववारा आत्रेयी का स्थान भी इन्हीं ब्रह्मवादिनी स्त्रियों में प्रमुख माना जाता है। शाश्वती अंगिरसी भी इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाली सर्वप्रमुख ब्रह्मवादिनियों में से एक है। इन ऋषिकाओं से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ प्रमुख प्राचीन काल की कुछ प्रमुख विदुषी नारियां हैं। कात्यायनी च मैत्रेयी गार्गी वाचक नरी तथा एवं माह्य विदुर ब्रह्म तस्मात् स्त्री स्त्रगविद भवेत्। अर्थात कात्यायनी मैत्रेयी गार्गी वाचक नवी आदि ब्रह्मवादिनी थी, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को ब्रह्मविद होना चाहिए। गार्गी वाचक नवी और मैत्रेयी ने शास्त्रार्थ में विष्णु के सामने ऐसे प्रश्न रखे जिससे उनकी उत्कृष्ट प्रज्ञा का तो बोध होता ही है, साथ ही साथ उनकी गंभीरता एवं उनके उत्तर की दुरूहता का भी बोध होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेहराज ने ब्रह्म के जैसे विराट विषय की सत्यता को जानने के लिए यज्ञ एवं अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने कई ब्रह्मवेत्ताओं को निमंत्रण दिया। इन ब्रह्मवेत्ताओं में 7 पुरुषों के साथ एक स्त्री को भी आमंत्रित किया गया जिसका नाम था गार्गी। उन्होंने पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त विद्याओं को पूछा और याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्हें अनधिकार प्रेक्षा कर उनका उसका उत्तर न देना उचित समझा, क्योंकि वह ज्ञान हर लोगों के हर एक ज्ञान से परे था। ऐसे में मैत्रेयी भी एक ऐसी ही बहुत बड़ी ब्रह्मवादिनी साबित होती हैं। इसके अलावा कैकेयी, द्रौपदी, बाली की पत्नी तारा भी ब्रह्मवादिनियों और शास्त्रज्ञों में से एक थी। इन सब से यह बात स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों ने अपने ज्ञान और विद्वत्ता की मुखर आवाज से समस्त भारतीय संस्कृति को झलकृत कर उसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया, जो आज भी संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है। थैंक यू सो मच मैम। अगली प्रेजेंटर है वैष्णवी सिंह। वैष्णवी, आपका स्वागत है। Everyone, my name is Vaishnavi Singh. I'm a student at East Asian Department, University of Delhi, and my topic is role and contribution of women rishis in ancient India. So I'll start. Women made a very vital contribution to the well-being of the family and community in ancient India. The Vedic era has witnessed numerous women scholars. The confirmation about the status and job of women sages in earliest history are tracked down in the Hindu holy texts, which are Ved. The hymn contained in these texts were created by different prominent rishis, and some of the hymns in Rig Veda were composed by female rishis, which demonstrate how skilled women were during the Vedic period. In ancient India, a multitude of elements including social structure, cultural norms, value system, and societal expectations shaped the role of position of women. Women were given social status and were allowed to participate in all activities and roles that men did. Women were viewed as gifted, intelligent, and proficient. They even took part in the administration and management capabilities. So, in the Vedic era, there were 2 types of learned women. The Brahmavadinis who lived long lives without being married and studied the Vedas, and Sadyavadus who studied the Vedas until they got married. They were familiar enough with the Vedas and other texts. The Rig Veda lists the name of many learned women like Vishwara, Apala, Ramsha, and Ghosha, who composed mantras and attained the positions of Rishi. And Lopamudra is also connected with the preaching many hymns from the first book of the Veda, and sage Agastya. Many hymns in Rig Veda are credited to Gargi, who is said to have written many hymns in Rig Veda. Maitri is also a prime illustration of the philosophical accomplishment and educational opportunities given to women in Vedic India.
She is regarded as a representation of intelligent Indian women, and also a New Delhi institution appear her name. Hindu women in pre-Vedic and Vedic era years stood firm in the face of adversity, and also having training like that of man, the unreservedly participated with man in most elevated philosophical discussions. The women were rishis and teachers in ancient India. In these cases, they carried out the job, duties of imparting information in terms of academic subjects, concepts, and other factors, which would enable them to promote their well-being. Many would enormously claim, based on a particular historical period, that Hinduism only oppressed and repressed women, but Hindu women's circumstances improved the further back in time we go. And the pre-Vedic and Vedic eras of Hinduism never witnessed the humiliation or subjection of women. These settings state from a later date, women at that period had certain power and received the respect. Vedic culture had a lot to teach contemporary culture, and women's emancipation is a hot topic in the modern period. So I will conclude my presentation by saying that adopting the traits and virtues of women in Vedic age can be extremely beneficial for repressed and powerless women in modern society, and finding frameworks that encompass all current conversation on the status of women in society can be made easier with the help of these women's sages vision. Thank you. थैंक यू वैष्णवी। मैम आ गई हैं, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अमूल्य कुमार साहू सर को कि वो आए और मैम को स्मृति चिन्ह देकर, प्रोफेसर हैं। चलिए, आपका मंच पर स्वागत है। आपका टॉपिक है वॉइसेस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। Chair and everyone present here. I, Dr. Survi, am presently working as Assistant Professor in Department of Political Science, Miranda House. I would like to thank NCVED for giving me this opportunity to present my views through my paper. Today I would be basically talking about 3 women contributors, out of which 2 are well renowned. One is Gargi and the other one is Maitri. The conversation of Gargi and Maitri with Yagyavalkya in court of Janak, and Gargi, who is a renowned philosopher, and same with Maitri. So I will not be focusing on these 2 because these 2 have been discussed. Today primarily I will be talking about another woman whose name is Sulabha. About Sulabha, it has been discussed in Shanti Parva in Mahabharata. She is a single woman, a renunciate, who goes to the court of Janak, where she wants to deliberate and discuss with Janak, who consider himself to be emancipated from all the worldly desires, and also consider himself to be one of the person who has attained a kind of salvation. So therein, in the court, and Sulabha, who is a yogini, so through her yogic powers, she turned herself into a beautiful woman, and therein, when she enters the court of Janak, through again with her yogic power, she enters the mind of Janak. Now Janak finds it very troublesome, and he puts certain questions in front of Sulabha, that is, "Oh lady, oh holy lady, what cause you conduct, what kind of conduct you are devoted to? Whose are you? From where have you come?" And basically what Janak was trying to do is doubt her actions. In response to Janak's conversation, Sulabha, without losing her patience, she replies to Janak in following words that, "O king, O you monarch, you said that you have emancipated yourself and you have attained salvation, but again you are still living in that dualism of mind and body, dualism of I and you. So here, if you need to know, we all are
coming from, or we all are result of one Prakriti. There, again, the second answer which Sulabha gives to King Janak is, O king, if you claim yourself to be free from the knowledge of duality, then you should not be asking about who am I or what is my purpose. Then another question about the union, because through her yogic powers, Sulabha had entered into Janak's mind, so and which was making Janak uncomfortable. So with that, Sulabha is trying to say that I myself is not connected with my body. So how can I be connected with others' body? It means it is because of her level. Through this dialogue, basically my argument is that the level of knowledge of Sulabha is much more than that of Janak. Now, when I told, please read the conclusion now. Yeah. Basically, I was trying to discuss that when Aristotle and Plato, who were talking about the concept of philosopher king and who were giving a minimal status to women, in ancient India we see that women have been given a higher stature. With this, I will conclude my point. Thank you. Thank you so much, Surabhi. So the next presenter is Suman Yadav. Thank you so much, ma'am. My name is Suman Yadav, and the title of my paper is Queen Didda, the most powerful and controversial woman ruler of early medieval Kashmir. So my paper discusses the reign of Queen Didda from a gender perspective as a woman ruler of Kashmir. It also highlights the challenges and difficulties she faced as a woman ruler and how she handled her opposition along with the socio-political circumstances that allowed and provided space to women to exercise control and authorities in the region of Kashmir in earlier medieval period. So in his work, Raj Tarangini Kalhana highlighted the power and agency of women in the royal court culture of Kashmir in two essential roles: as a sovereign ruler in their own right and authority, as a power worker behind the throne. However, Didda, Queen of Kashmir, had challenged such norms and claimed authority as a regent. Then as a ruler of Kashmir, she ruled for a really long time. Didda had emerged triumphant, quelling her opposition with sure hand and later dismissing the help of the male counselor in her solitary pursuit of power. Interestingly, she was physically disabled, was carried around by a porter called Volga, but she did not let this deter her in her quest for authority and power. The most damaging charge against Didda was her affection, admiration for Tunga, a Gujjar youth. But this charge doesn't bear validity as the queen was advanced in age, passing as her way of life when she met young handsome Tunga. However, Tunga's achievement in administration and military exploits is praiseworthy. He continued his duties even after Queen's death. Didda's rule is significant from another point of view. The share of women quoted, we may admit, was very limited in the administration. The succession on the throne was confined to male. As a result, the history of Aryan India doesn't furnish us with many names of female sovereigns. But among these, Queen Didda, the only instant in the history of ancient change, says D.C. Sarkar, which furnishes us with the detailed account of the activities of a female ruler. And lastly, scholars like Devi Karamachari and Rupani praised Didda as a donor builder. She built many temples and mathas like Didda Swamini Temple, Diddapura Town Matha, Shiva Swamini Temple. She also repaired and renovated almost all temples and shrines, for example, Jayavendra Vihara. So lastly, while concluding, we could say that Queen Didda's reign with no doubt was one of the most significant period of women's dominance as a ruler in early medieval or even throughout in Indian history. Despite of facing so many challenges and having physical weakness, she proved herself as a strong diplomatic administrator and a powerful ruler of her country. Didda, along with other few queens of Kashmir, represent herself as an example of women's role in court politics, which need more scholarly attention from various perspectives. I would like to thank all of you for listening. Thank you so much. Thank you so much, Suman. Welcome. Okay, so you are the next presenter. आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपका टॉपिक है इतिहास से हराम, delving in the presence of Mughal women in Italy. Good morning everyone, my name is Bhavya Agarwal and I am currently a student of Masters from PG Center, NC West.
My topic is Itihas-e-Haram, delving into the presence of Mughal women in Delhi. Basically, women in the Mughal era patronized Delhi and converted it into a center of art and culture. The architectural heritage that Delhiites today consider important in terms of culture and traditions of the city has its root set in the women who were patrons for these projects. So, henceforth, I will be exploring the notable works of art and architecture patronized by some prominent Mughal ladies belonging to royal family. But I will be beginning from Gulbadan Begum, who wrote Humayun-Nama, which is considered as a first-rate account of the domestic relations of the first two Mughal rulers, Babur and Humayun, with their wives, son, daughter, social and political life. Then followed her was Haji Begum, who built the Humayun's tomb, who was also the wife of Humayun. She was the first royal woman of Mughal era who built an architectural monument for in the terms of history. She was followed by Mahamanga, who was nurse for Akbar, the great emperor. He's considered. She built the Khair-ul-Manzil, which was a two-story structure where she lived and was then buried. Then comes Noor Jahan, who was one of the most prominent Mughal ladies. She is famous to have built many marketplaces and sarais throughout India. She was so famous that she was only a royal Mughal woman to have coins stuck in her name. She built the tomb of her father as well as her own tomb in Lahore. Then comes Jahanara, who is famous to have built Chandni Chowk market of Old Delhi. She also built a caravan sarai named Begum Sarai in Delhi, which has a lovely garden and is currently now a monument and tourist location. Her sister Roshanara also has designed many tombs, including her own tomb, which is present in the northeastern parts of Delhi. Then we have Akbarabadi Begum, who is known to have created Shalimar Bagh and maintained it brilliantly. We have the sisters Jaibun Nisa and Zinatun Nisa, who built quite a few tombs and wrote books and poetries, which were published posthumously. We have Qudsiya Begum, who was active politically and is said to have ruled in place of her husband in Bihar. We have Zeenat Mahal, who also built a mansion called Lal Kuआं Bazaar. Like them, we have many other notable works from different women who were not known, namely Fatehpuri Mahal, Nawab Bai, Kaniz Fatima, Rabia Begum, Mubarak Begum. In this retelling of the past, we have looked at the wives, concubines, female attendants, and other female personages of the era who were banished in the margins of history, with their contributions being considered meager or inconsequential. While some tombs and structures have not survived the test of time, there are several monuments still present in the capital that serve as reminders of these women who fought for their inclusion in history, accord to their identity as primary status as per their male counterparts. Thank you. Thank you, Bhavya. A. Raza, आपका स्वागत है. आपका विषय है Exemplifying Women Empowerment in the Medieval Indian Society, a study of Princess Jahanara Begum. Myself is G.A. Raza, doing PhD in CHS, Center for Historical Study in JNU, and continuity as N.C.M. Ramanujan. So, the title of my topic is Exemplifying Women's Empowerment in Medieval Society, a study of Princess Jahanara Begum. The feminist approach in history and modern phenomena that hardly exist in the pre-modern world. Still, it would be interesting to understand the past from the feminist perspective to import women by citing instances from the past. The Persian paper aims to study the contribution of Princess Jahanara Begum to the medieval society, who left behind many examples of self-independence for the women. The paper sheds light on the importance of self-independence, citing the instances for her life. From the feminist perspective, the paper aims to understand the history and the perception
built by the men. The paper also highlights the differences between the Persian and the European scholars' understanding of women empowerment in pre-modern India. Though the concern for women's rights existed in the pre-modern age, the demand for the women's rights with the concept of equal rights began in 18th century and turned into the movement in the 19th century in Europe. By the end of 19th century and in the early 20th century, women empowerment spread in other parts of the world. Women empowerment refers to 5 major substances: sense of self-worth, right to decision, equal access to the resources and opportunities, gender equality, and equal distribution of power. These all points move around those psychological, educational, social, economic, and political resources. These points can be hardly found in the medieval society as a mechanism to empower women, because women's empowerment as a concept didn't exist in pre-modern world. Similarly, the concept of nationalism is a modern concept which lacks in the medieval society. But considering the factors of nation building, the most significant contribution of Mughal era is the unification of India under a centralized government or empire. In this context, we can see the women has largely contributed in the nation building. The society in which life is entirely based on a patriarchal society, hence there always existed some crucial obstacles for women in the form of social norms, religious doctrine, and political and economic principles. These obstacles also were faced by Jahan Ara Begum. Actually, in this paper, I had tried to study her life in the context of what were the obstacles for her and what were the models, or we can say what were the options before her, and what were the resources she used to empower the women. So in this paper, I have tried to see 4 major aspects from her life. First, education, and second, politics, and third is economy, and is how she modeled herself or tried to project an ideal woman by combining the Turco, Mongol, and Islamic tradition. Actually, there was 2 options before her: Islamic tradition and the Timurid tradition. In the Islamic tradition, you know, there are certain restrictions, and because when you study history, you will find in the support argument secondary position and subordinate position were women in Islam given. Actually, in every religion, the subordinate position and second position were given to women. There is no religion which accepted women as with equal rights. In Islam, actually also has given secondary position, or we can say second status to the women. And the most Quranic verse which the ulama has cited in their support that women has a secondary position, here I cited here the Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd bima anfaqu min amwalihim. Men are caretaker of women, as women has provisioned by Allah over women and asked with the supporting of their financial. And there is a most cited hadith. Actually, this hadith, there is a phrase, this means the nations or the community who entrusted power or ruling power to women, that community or nation could never success. This hadith and Quran has cited frequently. In that situation, we know in the time of Akbar and Jahangir, the ulama has lost their influences, but by the time of Shah Jahan, once again they retained their powers and influences. In that situation, there was a you can say challenge for her to come out from the influence of ulama. That's why she chose mysticism, Sufism. Sufism is the only one field in can say in the Islamic tradition which provide a ground for women to get or space in mysticism. She used this mysticism. Please conclude now. We are short of time. So she used this mysticism to import women. How did she use? First, she sponsored construction of Khanka. She sponsored construction of mosque. She has written about the 2 books in Sufism. So by doing this or constructing the Khanka, constructing mosque,
or writing books. Actually, she tried to break the notion that the construction or expansion of the institution, which was mainly done by the male, she broke this notion by influencing to the Khanka and the mosque. And her name was written on the top of the mosque with Shah. So here I am concluding. There is a lot of instances, but here is no time to mention all these things. Mr. Raja, what are your sources? Primary or secondary? Yes, you can just ask later. Jahara Begum, she combined both Taimurid and Islamic tradition in her life and simply utilized them for herself resources. She contributed to the field of education, religion, economy and political society. There is a lot of instances of women empowerment in her life to argue with setting example for women. She made many times indirectly and sometimes directly tried to took decision which clearly convey the message of human empowerment. Women, her contribution in this regard at all challenges the male-dominant society and working the notion that men have special virtues and abilities, especially set example that women can do whatever a woman can do. Yes, sir, your question was. So what are your sources? Sir, in this paper I have actually used two types of Persian sources and English factories. Factory codes. Thank you, Raza. Thanks. Shukla, you are welcome on stage. Your topic is Ace Against Odds, Views on Women Through Medieval Times. Good evening everyone. My paper belongs to the broad theme of Ace Against Odds, Views on Women Through Medieval Times. Through this paper, I will be studying the idea of divinity and selfhood in Bhakti tradition with particular reference to the women saints of medieval India. This paper firstly highlights the idea in the context of women saints in general and then specifically traces it in the works and life of poet saint and erstwhile queen Mirabai. Here I would be focusing on the former part only due to paucity of time. In any society, when a woman tries to assert herself, she gets to face a lot more challenges than a male counterpart. They are not merely denied the subjectivity and intellectual significance, but are also resisted when they try to stress the same. Devotion in Bhakti movement was understood in the language that was familiar to the women, and this is what made them connect to it and resist the predominating social structure. This devotion was one understood in the language of love. The idea of self, as was understood today, as we understand today, flies on the face of identity as was understood traditionally, when the self was seen as embedded in society. Bhakti tradition in medieval India marked a significant point in this trajectory of evolution of self. Its idea of self, as could be seen in the works and practice of Bhakti movement, was not centered on individual, and looking from that perspective would essentially be wrong-headed. They understood their identity in context of religion that give meaning to their being and goes well with the understanding of the community too. The Bhakti understanding opened for them the door of religious freedom and self-expression. It provided them access to public space that was earlier the patriarchal domain, thus laying the groundwork for an egalitarian society and for the egalitarian idea of worship. They see the divine as their intimate partner, presenting God metaphorically in human terms. At the end, I would like to say women of Bhakti tradition place the broad philosophical question subtly in their daily lives when they talk about merging themselves with the divine and thus upheld the notion of deeper self as was understood in our age-old tradition. Doing this, they went beyond their physicality, gender, social norms and their ego, challenging the dharmic virtues as were established by Manu. Thank you and have a nice day. Thank you, Manisha. The title is very captivating, Ace Against Odds. But actually, it was the broader theme under which I wrote my paper, and the title of my paper is the studying the idea of selfhood and divinity in the works of medieval poets. Okay. So I wanted to discuss about the title, Ace Against Odds. What do you think? Actually, it is the broader theme as was given by NCL. Presenter Sana Banu.
आपका मंच पर स्वागत है। आपका विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शाही मुगल महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। Good evening, everyone. My name is Sana. Currently, I am pursuing MPhil from the Department of History, Delhi University, and also I am the faculty of Daulat Ram College in History Department. I am going to present my paper here, and the topic of my paper is मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शाही मुगल महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। जैसे कि अभी तक जितने भी प्रेजेंटर रहे सभी ने कहीं ना कहीं कंक्लूड किया कि भारत में हम इतिहास में प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं कि पितृसत्तात्मकता इतनी अधिक हावी रही है कि महिलाओं का योगदान उभरकर सामने नहीं आ पाया। मेरा पेपर इसी एक परसेप्शन को नकारने की कोशिश है कि ऐसा नहीं था कि किसी भी समय में महिलाओं का भारतीय इतिहास में योगदान नहीं रहा, बल्कि महिलाओं का भारतीय इतिहास में अत्यधिक योगदान रहा है। इसी का एक छोटा सा पोर्शन मुगल इंडिया को मैंने अपना सब्जेक्ट चूज किया है, जिसमें मैंने दो परसेप्शंस के ऊपर बेसिकली फोकस करने का ट्राई किया। पहला ये कि भारतीय महिलाएं, शाही मुगल महिलाएं जो हैं वो खाली मुगल हरम की एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, एक जो है वो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं थी, बल्कि इसके अलावा भी हमें डिफरेंट परसेप्शन दिखाई देते हैं जो इस बात को साफ तौर पर प्रमाणिकता देते हैं कि भारतीय मुगल महिलाएं अपने समय की जो है वो अग्रसर महिलाओं में शामिल थी। उनके द्वारा किए गए कार्य इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि उनका योगदान जो है वो भारतीय इतिहास में अमिट योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा परसेप्शन ये है कि भारतीय इतिहास को शुरुआती इतिहासकारों द्वारा इसी मानसिकता से देखा गया कि ये जो इतिहास लेखन है ये पितृसत्तात्मकतावादी इतिहास लेखन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कार्य मुगल हरम पर किया गया था के.एस. लाल द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक द मुगल हरम में इस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि मुगल हरम एक कामुकता की श्रेणी में आने वाला स्थान है, तथा इसी के अलावा अगर आप आरनाथ का भी काम देखते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्राइवेट लाइफ ऑफ द मुगल्स में यही लिखा है कि जो भारतीय मुगल हरम था वह कामुकता से भरा हुआ एक स्थान था, जहाँ पर महिलाओं का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कामुक चीजों को कामुकता की प्राप्ति के लिए किया जाता था। परंतु मैंने यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे नए हिस्टोरियन और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें सबसे प्राथमिक कार्य रेखा मिश्रा द्वारा किया गया, उन्होंने अपनी पुस्तक वुमेन इन मुगल हरम में साफ तौर पर यह दिखाया कि कैसे भारतीय मुगल महिलाएं न सिर्फ हरम में एक कामुक वस्तु के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु है, बल्कि इसके अतिरिक्त वो जो है वो अन्य मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो योगदान देती है। जैसे फॉर एग्जांपल राजनीतिक दरबारी कार्यों में मुगल महिलाओं का बहुत अधिक योगदान था। इसके अलावा चित्रकला, वास्तुकला, वाणिज्य, व्यापार, भाषा, पर्शियन लैंग्वेज में जो है वो मुगल महिलाओं ने अत्यधिक योगदान दिया। इसी पूरे प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता हुआ मेरा ये पेपर है, जिसमें मैंने मुख्य रूप से आरंभिक मुगल महिलाओं से लेकर अंततः अंतिम मुगल महिलाओं को कवर करने का प्रयास किया है। जैसे फॉर एग्जांपल खानजादा बेगम, हाजी बेगम, गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा, ज़ैनुन्निसा और ज़ीनतुन्निसा, इन महिलाओं द्वारा मुगल साम्राज्य में कला से राजनीतिक दरबार से लेकर कला, साहित्य और अन्य सभी क्षेत्रों में उनके योगदान को मेरा पेपर जो है वो प्रस्तुत करता है। थैंक यू सना। महिलाओं की स्थिति कहाँ पर है? आप तो पूरा एलीट वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द कॉमन वुमेन ऑफ मुगल? सर, मैंने महिलाओं की स्थिति नहीं, मैंने शाही मुगल महिलाओं का योगदान मुगल साम्राज्य में क्या रहा है वो मेरा टॉपिक है। लेकिन आपने जो बात में जो इंटरप्रेट किया है वो ये किया है कि महिलाओं का कंडीशन क्या है जी, आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें ये है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। तो हमें एलीट से निकल के जो थीम ये है एलीट से निकल के हमें कॉमन वुमेन की तरफ जाना है। ये सर, तो मैंने अपने निष्कर्ष में ये भी लिखा है कि हमको उस समय पे मतलब 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जो मुगल साम्राज्य रहा उसमें ना सिर्फ हमें शाही मुगल महिलाओं पे फोकस करना चाहिए, बल्कि उसके अपार्ट जो ऑर्डिनरी वुमेन्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और ना सिर्फ मुगल साम्राज्य के बाहर, ना सिर्फ कैपिटल के बाहर, बल्कि कैपिटल के अंदर भी, हरम में भी जो है वो मुगल महिलाएं और उसके अलावा जो ऑर्डिनरी वुमेन्स हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनका भी उस एरा में जो है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन है जो हमें लिखना चाहिए, और प्रतिशतात्मक जो व्यवस्था रही है बहुत समय से और जो विचार इतिहासकार में भी, इतिहास लेखन में भी दिखाई देते हैं, उनसे विपरीत हमें जो है वो सोचने की आवश्यकता है। तो मैं अपने अगले प्रस्तुतकर्ता, आपका विषय है मध्यकालीन प्रसिद्ध महिला रचनाकारों के साहित्यों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अध्ययन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर इसके सिंह है और मैं मेरा डावोस में अतिथि प्राध्यापक हूँ एनसीबीएफ का हिंदी विभाग। सबसे पहले तो एनसीबीएफ का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे पेपर प्रेजेंट करने का अवसर दिया। मैं दरअसल अपना पेपर पढ़ना चाह रहा था, लेकिन सर ने जैसे एक बात कह दी कि क्या मध्यकालीन महिलाओं की स्थिति रही, तो जो मेरा विषय है, टॉपिक है, वो है मध्यकालीन प्रसिद्ध महिला रचनाकारों के साहित्य में भारतीय संस्कृति के पक्षों का अध्ययन। दरअसल मैंने अपने इस पेपर में मैं थोड़ी सी बात करके सर की ही एक दो बातों पर, और मैं थोड़ा सा सना जी से अपनी जो राय है वो थोड़ी सी अलग में रखता हूँ। दरअसल मैंने सबसे पहले अपने इस पेपर में बताया है कि मध्यकाल का जो इसमें जैसे मध्यकाल का नाम जब लिया जाता है तो इतिहास की दृष्टि से मध्यकाल अलग है और साहित्य की दृष्टि से जो मध्यकाल है वो अलग है। इतिहास की दृष्टि से मध्यकाल हर्षवर्धन के समय से लेकर के प्लासी के समय तक मोटे मोटे तौर पर गिना जाता है, और अगर हम साहित्य में देखेंगे तो ये इसी का जो उत्तरवर्ती भाग है इतिहास के मध्यकाल का, उसी में आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक की मतलब सारा का सारा समय आ जाता है। तो एक तो मैंने इस बात को बताने का प्रयास किया। दूसरी बात कि जिस चीज़ को मार्क्सवादी इतिहासकार बड़े शौक से कहते आए हैं कि मध्यकाल स्वर्णकाल है, इस बात पर मेरी बड़ी गहरी आपत्ति है। और ये आपत्ति इस बात के लिए है कि जब हम मध्यकाल को स्वर्णकाल घोषित करना चाहते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि वो तमाम तरीके से, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, अन्य तमाम तरीके से वो बड़ा ही उत्कर्ष का काल रहा है। जबकि हकीकत ये है कि उस काल के अगर आप कवियों के अगर आप साहित्य पढ़िए और भक्त प्रवर चुड़ांत महाकवि बाबा तुलसीदास को अगर आप पढ़िए तो वो लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बनी, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करें। मतलब कि अगर आप उस काल को देखेंगे, पढ़ेंगे सही तरीके से, तो आपको ये पता लगेगा कि वहाँ पर गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता, अकाल, सामंती जकड़ने जो हैं वो तमाम तरीके। सर भी कह रहे थे कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें कि पद्माकर नाम के कवि हुए हैं, वो दरबार में ही रहते थे, और दरबार में जो आम जन की महिलाओं की जो स्थिति थी वो किसी भोग्या और एक वस्तु के समान ही थी, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर जो गजब गिजा है, सजी सुराही है, सुर बाला है और प्याला है। ये स्थिति थी वहाँ पर। हकीकत तो ये है। और एक जो मध्यकालीन इतिहासकारों की अगर मतलब जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं मध्यकाल को तो वो स्वर्णकाल बताते ही बताते हैं। जो मार्क्सवादी आलोचक हैं अगर आप उनकी बात को अगर देख लीजिए तो वो ये कहते हैं कि जो मध्यकाल की स्त्रियों के द्वारा जो लेखन किया गया है वो बड़ा ही प्रतिगामी है, बड़ा ही प्रतिरोधी है, और वो इसको कहते कहते बड़ी ही चालाकी से इस बात को साबित करने का प्रयास कर देते हैं कि वो कहीं न कहीं समाज विरोधी है। वो मीरा के भी लेखन को समाज विरोधी साबित कर देते, जबकि हकीकत ये है कि मीरा ने अपना महल छोड़ा था बाबा तुलसीदास के कहने पे। उन्होंने इस बात लिखा हुआ है, आचाराम संस्कृति की किताब को आप पढ़िए, उसमें लिखा जब मीरा सिसोदिया वंश की तमाम उपेक्षाओं से त्रस्त आ गई, तब उन्होंने लिखा कि स्वस्थ कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, हमको कहाँ उचित करीबो है यह लिखियो समझाई, जेते स्वजन हमारे हेते तेते उपाधि बढ़ाई, कि जितने हमारे घर के लोग हैं उन सभी ने मेरे कष्टों को बढ़ा दिया, मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कवितावली की एक लाइन लिखी कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, कि जहां पर आपकी मतलब जहां पर आपका मान सम्मान जो है ढेले भर का न रह जाए, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, चाहे वो महल क्यों ना हो। और मजेदार बात ये देखिए कि मीरा ने महल को क्या छोड़ा कि आलोचकों ने ये घोषित कर दिया कि उन्होंने परिवार, समाज, मर्यादा इत्यादि सारी चीजें त्याग दी, जबकि उन्होंने महल संस्कृति को छोड़ा था लोक संस्कृति को अपनाने के लिए। हकीकत ये सही बात ये कि उन्होंने लोक संस्कृति को अपनाने के लिए उसे छोड़ा था, और उनका पूरा का पूरा लेखन
मेरे पास चूंकि समय नहीं है कि मैं इसको बड़े डिटेल से मैं बता पाऊँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि आपको बड़ी मतलब एक शोध अध्येता के रूप में इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से इसका पर्यवेक्षण करना चाहिए कि वास्तव में वो क्या कारण है कि मध्यकाल में 4 बड़े महाकवि हैं, एक कबीर हैं, एक सूर हैं, एक तुलसी हैं, जयसी हैं, और चारों के चारों ईश्वर की उपासना करते हैं, और उस उपासना में वो बहुत ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ईश्वर की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि मीरा है, आंडाल है, अक्क महादेवी है, वो सीधे सीधे अपने ईश्वर में समा जाती हैं। वो समाने का भाव, और किसी बड़े से बड़े भक्त को भी उनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। उसके बरत मीरा, आंडाल, अक्क महादेवी जैसे जो भक्त कवित्रियों को छोड़ दिया गया या उनके योगदान को कमतर करके बताया गया। और तो और छोड़ दीजिए, मार्क्सवादी आलोचकों ने उनको कह दिया कि वो प्रतिवादात्मक हैं, समाज के प्रति जो उनका रवैया है वो प्रोटेस्टेंट है, और कहते हैं कि जितने सगुण भक्त हैं वो सभी रेजिस्टेंट हैं, प्रतिरोधात्मक है। मैं इस टर्म को 1 मिनट में मतलब बता दूं। प्रतिवादात्मक कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि समाज में जिस तरीके की अगर बुराइयां हैं तो उस पूरी की पूरी प्रथा को बदल देना चाहिए, या पूरे सामाजिक परंपरा को भी बदल देना चाहिए। प्रतिवादात्मक है। प्रतिरोधात्मक का सीधा सा मतलब ये है कि जो समाज में अगर कोई बुराई है, जैसे शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई रोग हो जाए तो हम उसको काट नहीं सकते, हम उसका इलाज करते, वही सबसे बेहतर है। तो प्रतिरोधात्मक का मतलब है कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देना, यही सबसे बेहतर है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूँगा जी, मैं समझ गया, मुझे कहना था बहुत कुछ, लेकिन खैर मैं कंक्लूड कर दूं कि अगर हम मध्यकाल में इस जो भी महिला रचनाकार हैं, प्रमुख महिला रचनाकार हैं, अगर उनके साहित्य को हम पढ़ते हैं तो 3 बड़े हमको जो है वो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले मूल्य दिखाई देते हैं। उनमें से एक जो सबसे पहला है वो लोक वेद मर्यादा की स्थापना है, दूसरा है प्रेम के विराट स्वरूप या प्रेम के जीवन मूल्य के तौर पर स्थापना, और तीसरा है लोकोन्मुखता या लोक संस्कृति के प्रति अपना कह लीजिए कि समर्पण। तो बस मुझे इतना ही मैं अभी कह पाऊंगा, हालांकि मैं पूरा पढ़ता। हाँ जी बिल्कुल सर, हम जब भक्तिकाल के साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के बावजूद मैं देखता हूँ कि उसमें जो महिला रचनाकार है उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा दिखाई पड़ती है। मीराबाई के अलावा जो है अन्य जो भी भक्त कवित्री हैं उनका नाम तक का भी उल्लेख नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस बात से, और यही बात मैं कह रहा हूँ कि उसको हमें नए तरीके से खोजने की जरूरत है। उसमें सहजो बाई है, उसमें हमें कुछ अंतर अनुशासनात्मक स्तर पर भी चीज़ों को ले आने की ज़रूरत है। जैसे हम आलवारों से आंडाल को अगर लेंगे तो काफ़ी कुछ जो है तिरुवरतम, तिरुवंदादी, ऐसी तमाम रचनाएं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। बिल्कुल आप ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे बताना कि हर्षवर्धन का काल हिस्ट्री में भी मध्यकाल में नहीं आता। नहीं, मैं ठीक है, बिल्कुल मैं मध्यकाल की ही तो बात में कह रहा हूँ, मैं मध्यकाल की ही बात कह रहा हूँ जी। ठीक, 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, मतलब 8वीं शताब्दी का जो है आप उत्तरार्ध कहिए, वही है हर्षवर्धन जी का काल। थैंक यू ऋषिकेश। हमारी कोरियोग्राफ होगी तो वो बहुत ज़रूरी है, आप सब उसके लिए प्लीज़ रुकें। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम द नेक्स्ट प्रेजेंटर डॉक्टर गजेंद्र। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन स्टेज। 2 minutes left. Okay. Thank you. Good evening, everyone. As already said, my topic is role of Indian women in nation building, case study of Savitribai Phule. So, many have talked about women and their role in the society. As I could understood till now, there are 2 ways looking at the women and their condition in the society. And those are, on the one side we are seeing that women were very revolutionary and they did very good job in the society and their condition in the society was very good. On the other side we see that women were very oppressed, depressed, and they were suppressed by the other members of the society. So the voice of Savitribai Phule is from this side, which talks about the oppressed women and the oppressed communities in India, and she worked for the rights of those oppressed communities. So my paper is talks about Savitribai Phule. So Kranti Jyotibai Phule was a great social reformer, educationist, symbol of Indian feminism,
first Indian women teacher of 19th century India. She broadly worked and contributed in promoting the education for oppressed classes, as I mentioned, women, and eradicating social evil practices like untouchability, women remarriage, caste practices, and other social evil practices which are inhuman in nature. So she worked for the eradication of these evil practices, and for that she understood that education is a tool through which we can remove these social evil practices. So she worked, and she was born at 1831 in Pune, and from there her journey started, and she married at the age of 9 to Mahatma Jyotiba Phule. Mahatma Jyotiba Phule is considered as the third guru of the great social reformer Dr. Ambedkar, and there we can see that how Kuvar Sudra book has been dedicated to Mahatma Jyotiba Phule by Dr. Ambedkar. So he worked for the upliftment of that classes. So Savitribai Phule and Mahatma Phule, they both worked together in the field of social reforms. So we will see that many of the works of both of them, we see that there is a cooperation between them. So I am skipping the conceptual understanding of nation building because we already know what is the nation building, what do we understand by that. But in modern times, what do we understand? I would say that nation building is used for state building, democratization, modernization, and political development and peace building. So this is the work Savitribai Phule worked, and for that she opened first female school in Pune in 1848, and from there her journey of education started. And she opened around 18 schools for the teachings of marginalized section of the society. And she and Phule both understood that the ignorance and caste discrimination and discrimination based on language are the three banes of this country, like India. So to remove this bane, they work for the education, and through this they try to eradicate the social evil practices in India, like caste untouchability and all. So they started their work for the Mahas and monks in the beginning, and from there they other works they started, like they opened two institutions, like Native Female School in Pune in 1850, and the other was Society for Promoting the Education of Mahas and Monks. Gajendra, please conclude now. Time is over. Okay. So almost I have discussed in my broad themes and topics which will be in my paper where it is published. So this is what I wanted to say, that she worked for the upliftment of the marginalized section of the society with the special reference to the women irrespective of their caste, class and gender. Thank you very much. Thank you, Gajendra. Now, New Education Policy 2020 and Governmental Initiative towards Women's Education. Good evening to one and all present here. Myself, Dr. Deepika Sharma. I have done BA English Honours and PhD postdoc from Punjab University, and right now I am working as Associate Professor at Chandigarh Women from their early childhood. Thank you. Thank you. So now I would like to welcome the next presenter, Dr. Abhishek Kumar Singh. NCW का वंदन, समस्त नारी शक्ति का वंदन। हिंदुत्व के विजय और वैभव की प्रतीक भगिनी निवेदिता व एनी बेसेंट, उन दो नारी शक्ति का वंदन जिन्होंने विदेश से भारत आकर सनातन भारत के वैभव को पहचान कर स्वयं को समर्पित किया। भारत में आज भी जिन विदेशियों पर गर्व किया जाता है उनमें भगिनी निवेदिता का नाम पहली पंक्ति में आता है, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में देशभक्तों की खुलेआम मदद की, बल्कि महिला शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगिनी निवेदिता का भारत से परिचय स्वामी विवेकानंद के कारण हुआ। स्वामी विवेकानंद के
सनातन संस्कार से वह इतना प्रभावित हुई कि न कि रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य को अपना गुरु बना लिया, बल्कि भारत को भी अपनी कर्मभूमि बना लिया। उधर एनी बेसेंट का विचार था। एनी बेसेंट का विचार विश्व के विभिन्न धर्मों का लगभग 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हिंदुत्व जैसा परिपूर्ण वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक धर्म और कोई नहीं है। बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं है। हिंदुत्व ऐसी भूमि है जिसमें भारत की जड़ें गहरी पहुंची हुई है। हिंदुत्व को यदि उखाड़ा गया तो भारत रूपी महावृक्ष निश्चय ही अपनी भूमि से उखड़ जाएगा। एनी बेसेंट का यह विचार हिंदुत्व के विजय और वैभव का प्रतीक है। दरअसल पेपर का ये कहना है कि बाहर से आने वाली नारी शक्ति भारत के संस्कृति को पहचानती है। हमें इनका गौरव करना चाहिए। हिंदुत्व से प्रभावित दोनों विदेशी महिला शक्ति ने भारत के गौरव के लिए जो योगदान दिया, उनका भी वंदन है। अतः यह भारत के सनातन संस्कार का वंदन है। सनातन संस्कार की प्रतीक भगिनी निवेदिता एक अंग्रेज आयरिश महिला थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने कलकत्ता आकर स्वामी विवेकानंद से दीक्षा ली और कलकत्ता आकर भगिनी निवेदिता ने महिला शिक्षा के माध्यम से भारत की महानता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय बंगाल की विधवाओं पर जो कठोर अनुशासन लगा था, उनको उन्होंने शिक्षित किया और समय को भी भारत को समर्पित किया। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ बहुत से स्थानों का भ्रमण किया। स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए बालिका शिक्षा के लिए कलकत्ता में भी एक स्कूल खोला। भगिनी निवेदिता 1911 में भगिनी निवेदिता का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया गया। ऐसी अद्भुत नारी जिसने विदेशी होने पर भी अपना पूर्ण जीवन भारत की सेवा में बिताया और हम सबों को हमेशा याद रहेगी। उनका आत्म बलिदान हमारी मातृभूमि का गौरव है। आत्मनिवेदन की यह गाथा हमारे देश के सभी श्रेणी के लोगों में मन में स्वदेश प्रेम, स्वधर्म के प्रति जागृत करने में पूर्णतया सक्षम है। जीवन के अंतिम समय में भारत के बारे में उन्होंने कहा था, द बोट इज सिंकिंग बट स्टिल आई सी द सन इज राइज। एनी बेसेंट हिंदुत्व की रक्षक एनी बेसेंट उन्होंने जब लंदन में तब जन्म लिया जब दुनिया भर में ब्रिटिश शासन था। एक पादरी से शादी हुई, लेकिन उनका ईसाइयत पर से भरोसा उठ गया। तलाक के बाद कुछ सालों तक मजदूरों के लिए काम करती रही। उसी दौरान थियोसॉफी के विचार से प्रभावित हुई और जल्द छोड़कर वो भारत आ गई। भारत के प्रति उनका रुझान इस कदर बढ़ा कि उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए प्राचीन हिंदू सभ्यता को सबसे महान घोषित किया। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई में भी वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उन्होंने कितने ही ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने वाराणसी को अपना घर बना लिया। इसी वजह की मौत के बाद भी उनकी अस्थियां लंदन में नहीं, बनारस में प्रभावित की गई। मैं उनका, चूंकि समय कम है, संक्षेप में कहना चाहता हूँ। संक्षेप में एनी बेसेंट एक विदुषी महिला थी। उन्होंने सैकड़ों पुस्तक लिखे। उन्होंने समय को पूर्ण जन्म का हिंदू व भारतीय मानती थी। उनकी इच्छा अनुसार, जैसा कि मैंने कहा, उनकी हस्तियों का बनारस में गंगा में विसर्जन किया गया। समय कम है, मैं कंक्लूजन करता हूँ कि विदेश से आकर नारियों ने कहा, हिंदू ही यदि हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर भारत के सपूत हिंदुत्व में विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? भारत और हिंदुत्व एक है। भारत स्वयं स्त्री शक्ति है, भारत स्वयं मातृशक्ति है। पितृसत्ता का सदियों से यहाँ कोई स्थान नहीं था। ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति है। धन्यवाद। एक कॉमनैलिटी और एक नॉन कॉमनैलिटी जिनमें वो डिफर करती थी। भगिनी निवेदिता में कॉमन था कि वो सनातन संस्कार को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, ये कॉमन है। और भी एनी बेसेंट भी मानती थी। एनी बेसेंट भी मानती थी। भगिनी निवेदिता और एनी बेसेंट में कॉमन चीज क्या है? मैं डॉक्टर अभिषेक, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, खालिंदी कॉलेज। थैंक यू सर। डॉक्टर प्रियंका वर्दिया, आपका टॉपिक है फीमेल अनसन हीरोज ऑफ रामाकृष्ण। शी इज द लास्ट प्रेजेंटर। Good evening, everyone. My topic is related to, again, Ramakrishna Mission. We're talking about Sister Nivedita, and I would like to continue with that only. I have come from Shimla, HP University. I'm an associate professor over there, Department of English.
So, my research paper entitled Female Unsung Heroes of Ramakrishna Mission talks about Ma Sharda, Margaret Noble, later known as Sister Nivedita, Josephine McLeod, and Sarah Chapman Burke. It projects the spiritual journey of Ramakrishna disciples as Karma Yogi, Jnana Yogi, and Bhakti Yogi to direct modern generations to find pearls of wisdom in Indian monastic order. Vivekananda and her experiences as Parivrajak, while Himalayan explorations are exemplary. We can think about Nivedita as Lokmata. We can think Nivedita about her spiritual explorations. We can say that she was an exponent of yogic philosophy, as Swami Vivekananda is known as modern yogi because he implemented the yogic philosophy into real life through practicing it and taking it to the West. We can say Ramakrishna mission gets the wings through Swami Vivekananda, through Sister Nivedita, Saravul, and at the same time, Bhagini Nivedita gave her entire life, dedicated her entire life to Indian freedom. She was more Indian than any other Indian. We are very short of time, So, Swami Vivekananda writes the mother's heart, the hero's will, the sweetness of the southern breeze, the sacred charm and strength that dwell on Aryan altars flaming free, all these be yours and many more. No ancient soul could dream before, be thou to India's future son, the mistress, servant, friend in one, the mistress, servant, friend in one. Thank you so much. Thank you, Priyanka. मंच की तरफ आ जाएं क्योंकि अब हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे. आप लोग कुछ आगे चले, इधर चले जाइए. ठीक है. यस. लाइट बढ़ा लीजिए. Thank you, ma'am.